Good evening, everyone. Welcome to the episode 6 of India Money Live. And slowly, we have reached the sixth episode. We started this, I think, on 13th June. So, today we will be covering certain stories around the markets, US markets, and one interesting segment with special guest. We had declared it on our X handle. And I want to welcome my co host, Dhanesh. How are you doing? All good. Very rainy in Bombay today. So yeah, excited to be here again. So I think you should inform me like when it's not rainy, probably that's the right reminder, especially in the month of June and July. Right. Yeah. So what else? I mean, sixth episode. How many days? 30 odd days, 35 days. Yes, and we hit 500 followers on X already. And doing pretty fine on, I think, YouTube also now. So just allow us a minute. And in case you see any lag from our end or some mic issue, feel free to comment. Just for new viewers, want to explain it here, like how this thing works. We will be taking questions from your end also, and we will be covering certain stories around business, little bit of tech and financial markets. Feel free to give your feedback and views in comment box on X and YouTube. Allow us a second. We are just sharing the stream on our X handle. Same. And then we will be starting this. Yeah, done with it. Cool. All right. So I think let's jump onto the first story itself, right? All right. So I think probably in second episode or first episode, we discussed that Indian investors can now invest in US stocks. And one trade was going on pretty well, which we are talking about memory stocks or semiconductor stocks. But from there on, like in last 1 month, the same stocks are just cooling off a bit. And when I say bit, it's just not 5 to 10% correction. It's actually, you can see on the screen, we will be sharing it. But I want to take view of Dhanesh here. Like he said, like he is not in favor of US investing at the moment. And we also said like one should put money gradually and not, just whatever money they have and just investing in one go. So at the moment, if any investor who bought US stocks, famous US stocks, they are down probably 30 odd percent. Right. I think the top aligns with the day the announcement was made that Indians are allowed to invest in US stocks. So yeah, retail always gets caught in such situations. But like, I think I should ask you this question. Like the entire thesis was this, right? If memory demand is, I think, 5 times the supply that is there, and the shortage could last past 2030 or in 2031, then why are these memory stocks following now? If that was the entire thesis, right? The supply hasn't stopped. I think this, like, even if you see the entire circle or cycle of this AI stocks rally, it is not a very smooth kind of rally. I mean, I was watching the chart of Micron technology. I think it also did 34% running correction even during this AI cycle. So there is no any such disaster kind of news from anywhere that these stocks are reacting on certain news. It's just, I mean, we can call it correction sort of. I don't really call this thing as healthy correction or as such. I mean, I don't believe in that thing. The thing is, when correction happens, people lose money. I don't know how people call it. It's just healthy correction, digested or those kind of things. But one more thing, like these stocks are pretty volatile in comparison to, and these are large cap stocks. We are not talking about penny stocks. So even if it's a running correction, one can expect such drawdowns, because I said in January also, I think January or Feb, when Micron technology began this run, it did crash or corrected 30 odd percent. And even right now it's down 25%. Talking about SK Hynix, which is a Korean company, it's also down 31% in last 1 month. We are talking about last 1 month data. Samsung, which I think made record profits,
is also down 30%, and SanDisk, I think it touched $2,000 level probably, and it's down 38% at the moment in last 1 month. But we have to also take into account that the run-up was huge, right? I think stocks went up 5x, 6x in a pretty short amount of time. So the price correction follows is usually that strong, right? It's profit booking that is happening. It could be. I mean, one can cook stories around it. At the moment, we are presenting a picture, right? And that's why I said, I mean, I don't want to comment or say it as healthy correction. I don't have any exposure in these stocks at the moment. But the thing is, if you have been the investor of these stocks, I mean, you are pretty used to such corrections, honestly. Because the thing with, if you haven't invested in US market or didn't observe it, I want to clear one thing. There are no circuit breakers in US markets. So like in India, if HDFC Bank makes 2% move, it becomes a headline, right? On the upside or downside. And that's pretty normal in USA. So even if we call it like healthy correction or whatever term you want to give, but such volatility happens on daily basis in US market, honestly, in these stocks. I have seen these stocks gapping up, like Micron recently posted record earnings, and it gapped up probably 15% and then it gave up most of the gains and then again closed, at day's high, or next day it rebounded to new highs. So one need to digest this volatility. I mean, it's not like if you had invested, this amount of money in SanDisk last year and the entire ride would have been smoother. That's not the case. So from market point of view, that's the case. Yeah, because I think this memory cycle is always been in this boom and bust moves, right? Like every 3-4 years, like the high prices will ensure that all these companies come and put in more capacity that will end up giving and meeting the demand in the next 2-3 years. And then again, because the supply comes, the price collapses and the earnings reduce. And so what do you think of that? Yeah, and that's why I saw a lot of people, sharing their views on this thing. And I saw this P ratio of Micron. It's still close to 5, I think. So people are thinking like memory is a growth story, and let's assume if it's a growth story, like that's the hypothesis around this. And they believe at 5 PE, Micron technology is pretty undervalued, because the term you are explaining here, that my memory has been a cyclical kind of thing. It's more like oil. I mean, the reason why I'm comparing this with oil is how countries who hold the control of oil, they usually, you can say, control the price of oil also. So even in the case of memory, it's just few makers here. One is your Samsung, and then SK Hynix, SanDisk, Micron, especially these three names, Micron, SK Hynix, and Samsung. So these guys can actually even control their, you can say, supply from their end, and just to keep memory prices high. But at the moment, honestly, they are facing real crunch, and you can say delivering memories to or meeting the demand at the moment. That's been the case. Interesting. Let's see. Like, I don't think Indians have any exposure in the Indian space to these plays. Yeah, and that's why we have seen Nifty didn't really react to such fall. Even S&P 500, which is a diversified index, it is not that much down. It's just these stocks which are hot. These stocks are down. So in fact, Nifty closed somewhere 24,300 odd levels. In fact, our IT stocks also bounced 12% from bottom. We were observing Infosys, it fell below 1,000, and then now it's close to 1,100, I think. So good move there. But just want to present one interesting story here. So did you observe people were talking about country-wise return in 2026? Yes. And so Korea has an index. Korean index, and I think, Korean index was the one where everyone was talking about the momentum. Yeah, so just like we have Nifty 50 index, Korea got Kospi index, and I think 30% or 40% of weight in this Korean index is concentrated in Samsung kind of stocks actually.
So it's pretty concentrated kind of index. So it actually moved a lot. I think it was close to 10,000. I will share the exact level. Just allow me a second. The index goes with the name Kospi. So yeah, it peaked somewhere close to 9,000 levels on 19th June, and we are doing this on 18th July. Right now, it's trading around 6,800 levels. So from 9,000, it has gone down to 6,800 levels. And the story we are covering here is, so in South Korea, 1 in every 30 Koreans just got margin called. Like imagine the euphoria the country was facing. So if we just want to do it on India, like how many people we have? 140 crore, right? Assuming adult population, what? Must be close to 100 crore, just estimate. So it's like 1 in 30 is like 3 odd percent. So 3 crore investor facing margin call in one go in India. That's the scenario here. It would break the exchanges also. Right. I mean, how many investors we have? What? Somewhere close to 10 crore or something, right? Yeah. So that's been the case. So that's one interesting story. I also saw some people attacking those influencers who were giving buy calls on Kospi and all. And Koreans are known for their leverage position, which is happening here. And even the Taiwan index is very similar, right? Mainly by TSMC, the weightage. So right. The same volatility effect is even faced there, because it's kind of opposite to what our Indian market is, where I think the highest weightage in our market is, I think, HDFC now combined along with Reliance, and it's less than 30%, and here it's greater than 50% in many cases. So yeah. And you wouldn't believe it, despite this correction, the Kospi index is still up 58% this year. So that's how euphoric this rally has been earlier. That's the power of momentum. Right. And that's how, I mean, if you are investor in such indices, even, you need to accept this volatility. Like this will happen even during the uptrend. This was the case. I mean, if you are going up 5% in a day, you need to digest that someday the correction will also come, or and it will be of higher magnitude than your Nifty or those kind of indices, right? Because you need to see what this index is made up of. So that thing decides everything, right? So apart from this, what we are covering today, so something new happened. I think we covered it last time. I think you called it before most of the people last time. Right, and I was not expecting this to happen so quick. So just to explain this, there is a company, Chinese company called Moonshot, and they released their new AI model, which is Kimi K3. And we were talking about how world is moving towards efficient intelligence. It's not about paying higher price for highest intelligence. It's also about how efficient it can be on the cost basis, right? And in this table, this is a table for a benchmark. Kimi K3 managed to beat Fable 5, which is the most advanced model from Anthropic, at 30% of their cost. So that's what China is doing. And that's why last time we discussed that the price of token have to come down. It cannot be, it cannot be like you are building a 5-star hotel and then on the name of improvement, let's assume I'm Taj, okay, I have opened a luxury hotel and it got everything. Now after 5 years, I believe we need to raise the standard. Okay, my room costs 30,000 per night at the moment. Then I am accelerating it to 50,000, making it 7-star. I cannot make it to 15-star. At some point, you need to see what market wants, right? And that's what's gonna happen in this token case also. That's what I believe. Again, so you're saying the consumers will be the winner here again? Yeah, that's the thing. I mean, we covered this story earlier also, right? Companies are burning their budgets on tokens, which was annual budget. They are burning in just 2 to 3 months. Uber did it in 4 months, I think. So and this is also along with the weekly resets that they give, right? Of limits, like randomly cloud, and they'll give the free weekly resets. I mean, that's for us consumer. I'm more talking about, enterprises section. Those guys pay on the API terms. But even for us, I mean, the main market for this AI is actually that enterprise, which Anthropic is trying to
capture. I mean, OpenAI still has been a consumer kind of company. They just entered into enterprises, or you can say they launched that ChatGPT they were doing with what was that video generation? Sora, I think they recently shut it down. Yeah. So, but Anthropic has been one company which is just enterprises facing more of a B2B kind of thing. And if those people cannot pay their AI bills, or they believe they are not getting enough value out of it, obviously they need to think about it, because one Chinese company is coming here and delivering similar kind of intelligence, or at least what they are claiming here is higher than their Fable 5, which is the most expensive model at the moment. And this Chinese company is doing it just 30% cost. You can clearly see in the price section here. So a lot of things happening here actually. So what do you think about Apple then? They were not like developing anything in the AI space. And that's the funny thing. Like they got trolled for this. Like all companies are investing a lot of money in building AI infra. Even Amazon is doing it. They are burning their cash. Every company is doing this capex kind of thing, and some company holds some stake in Anthropic, or maybe someone has backed OpenAI. They got AI exposure or those kind of things, and everyone was just trolling Apple. Like it was like if Steve Jobs would have been here, he would have just left Apple, or probably yeah, those kind of things. Like he wouldn't have taken this. If world is moving towards AI, how the hell Apple is not having any exposure and they still got that Hey Siri? That's all they have, the smartest thing at the moment, right? But right now, as picture is turning, Apple just hit all-time high, and even in last 6 months, FANG stocks haven't done really well. But Apple is up 35% during the same period in last 6 months. So the move, which was called foolish, seems to be genius at the moment. Genius move, yeah. Market is calling, yeah, you are genius, right? So that's the case with Apple. Yeah, but let's see, like, that's the beauty of this space, right? No one knows with much certainty like what's going to happen. Like, is it going to be another boom and bust cycle, or maybe this time it turns out to be a secular growth story? Really hard to predict, honestly. Exactly. So many, I would say, it's that kind of decision tree. Like if somebody asks what's going to happen in AI world, it's just even these companies, not just consumer companies, need to adapt really quickly. And they have been doing, as I said, OpenAI launched Sora. They assumed this will be a thing, and they burned probably $1 billion onto it, and then they shut it down. And they just pivoted to this B2B kind of. They actually focused more on this segment rather than offering some cute videos or giving power to consumer to generate some cats and dogs kind of videos. So that's been the case. So idea is pretty simple. So many variables in this decision tree that you cannot predict it, but you need to react really quickly. That's been the case. Interesting. I think it's a topic that everyone's going to be keep tracking, even going ahead, especially the US space. Do you think we should move on to the next topic now? Yeah, right. Let's move on to the next story. That's just AI update for you. All right. So this is pretty different story. We were talking about tokens and all in previous story, AI, technology and all. But today we're going to take one interesting thing. Every one of you must have gone on to vacation or just hanging out even in your city, visited a cafe, and you must be like, yaar ye kitne rupe banate hain ye? Like you must have been paying 2000 odd bill, और फिर वो कैलकुलेशन करते हैं ना कि मेरे जैसे 50 लोग और आ गए तो रोज का 1 लाख कलेक्शन, राइट? But that's the main story actually. We want to break this down, how restaurant and cafes, coffee shops, these kind of food businesses make money and what's the economics behind it. So that's the second story for the show. So yeah, I think it's been crazy, right? Like there have been
places like near our house in Bandra, like everyone goes crazy. Like I want to go to a Bandra cafe. People are traveling 1 hour just to get a table at Bougie in Khar. They have like 3 outlets in the same locality. So it's been a very big culture change, I think. It's like Western culture, like we have been adapting recently, and people are willing to spend a lot more than earlier now. That's been the case, and but one thing I want to target in this segment is the aspiration. Like whenever I visited such places, I have seen people discussing about this thing. 5 tables, this much bill from one table, this is the daily collection and all, right? Obviously, that way, the Western culture you are talking about, like hanging out at cafes is one thing. But there are people who think it's a very easy business, right? You are paying bills and, they just do this maths, 5 tables, this much bill, daily collection, this is how I'm going to make on daily basis. So, but it's like tuition teacher, that's right? not how it is. Yes. How many students? If they have 20 students, 4 batches a day, 80 students into monthly earnings, and estimate the total income of the tuition teacher. But I think cafes are a different game. I think F&B as a space. It's not that easy the way people think. Because you see, right, everyone, the disruption level is very high, right? No one would have thought Domino's would be in the state that they are in right now. Earlier, that was the only pizza place that we had. Everyone used to go crazy behind 30-minute delivery and Domino's pizza, the garlic bread and the cheese burst pizza. But now, I think if you come to Bombay, you'll find a pizzeria in that particular locality, at least 5 of them. In fact, Domino's is more of a tier 2 brand these days. Yeah. It has lost that thing. I think it used to be a peak premium kind of thing during Hera Fairy days. I think they did that. Yeah. That was the first paid ad you can say in a movie, right? So, and but anyways, it went from top quality to, I think, probably bottom tier within like 2-3 years. The disruption was so fast. And it is probably visible in their stock price also, Jubilant Food. And the entire QSR space actually hasn't ended up doing well in terms of the stock prices also. If you see, like I think the one person who sustained is McDonald's because they catered to the veg and Indian taste. But otherwise, it's very fast changing, I think, the environment in this space. All right. I think we are not the right person to break this down. So for this segment, right, we know this is the dream of many people to open their restaurant, cafe, coffee shop, or whatever, right? To break this down, so we are inviting one person who is betting on. Remember, we invited. We were talking about the whey protein and rise of this culture. We are inviting the guest who is a founder of North Indian food chain, which goes with the name Kadak Singh the Dhaba. We are talking about Mr. Kawaljeet Singh. So he is betting on. Let's add him and. Yeah, so I was introducing. Yeah, I will just complete it. So we were talking about कि हर कोई protein पे bet कर रहा है, but there is this one person who is betting on India's authentic naan, dal makhani and all, and he's doing brilliantly. Like, hi Kawal, how are you doing? Hello everyone. बहुत अच्छा लग रहा है. Good to be on the show. तो कैसे कर रहे हो आप? मतलब पूरी दुनिया प्रोटीन स्नैक्स एंड ऑल आप उसी पे वेट कर रहे हो कि नहीं ठीक है नान खाएंगे संडे को, लोग नान ही खाएंगे एंड वही बिजनेस बनाते हैं. देखो मुझे ऐसा लगता है कि ना सोशल मीडिया परसेप्शन इज अ वेरी बिग थिंग. प्रोटीन का जो अभी भी डायमीटर रेडियस कह लो वो बहुत छोटा है. आप देखो कि फैमिलीज में सिर्फ 20s 30s तक के बंदों को प्रोटीन की नॉलेज है कि क्या है, वो भी ट्विटर और से इंस्टाग्राम पे कुछ परसेंटेज लोगों को. राइट. एंड दैट इज अ फोर्स्ड फूड. दिस इज नॉट अ डिलीशियस फूड. हम जो सर्व कर रहे हैं दैट इज डेलिकेसी. आइसक्रीम सबको पता है खराब है हेल्थ के लिए, लेकिन आइसक्रीम्स का बिजनेस कहां से कहां गया है. आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री को किसी डेवलप कंट्री से कंपेयर करो, उनके वहां पे जैसी कंट्री डेवलप होती है बेकरी की सेल्स बढ़ जाती हैं, स्नैक्स की सेल बढ़ जाती है, फास्ट फूड की सेल्स और बढ़ती हैं. अब अमेरिका हमसे कितना ज्यादा डेवलप्ड है और वहां का फास्ट फूड कल्चर इज मच बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस. हम सोच भी नहीं सकते कि हम वहां तक कब पहुंचेंगे एट अ पर स्टोर लेवल, और मतलब पर 1000 पॉपुलेशन में कितने स्टोर्स डाल देते हैं वो. तो वो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है.
बिकॉज इफ यू Okay. सी जोमैटो ने 2015 और मे बी 16 से पुश करना स्टार्ट करा है ऑनलाइन ऑर्डरिंग को. You see the economics. If a shop at that time did, for example, 50 orders per day on retail level, that shop is now doing 400, 500 orders per day also in a small locality. To see the boom which online market has created for everyone. तो उससे क्या है कि अब आपको एक बारी आदत लग गई, आपको टेस्ट लग गया, आपको फिर रेजिस्ट करना पड़ेगा अपने आप को कि ये मैं ना मंगाऊं, और वो हो नहीं पाता. तो आप कह रहे हो वो चलता ही रहेगा और इसी पे बेट करते हैं. सो जस्ट टू एक्सप्लेन, वैसे भी बटर चिकन में प्रोटीन तो होता है ना चिकन में. हम तो बोलते हैं टेस्ट बेच रहे हैं, प्रोटीन थोड़ा सा मिल जाएगा आपको. मैं आपकी स्टोरी देख रहा था, मतलब अब 70+ आउटलेट्स हो गए हैं खड़क सिंह द ढाबा के, एंड मतलब हर हफ्ते में देखता ही रहता हूँ ट्वीट्स में, आज इधर एक्सपैंड कर दिया, आज इधर, तो काफी जल्दी एक्सपैंड हो रहा है, और एटलीस्ट कह सकते हैं हम अब देख रहे हैं कि काफी जल्दी एक्सपैंड हो रहा है. बट आपने आई थिंक 2018 में ये स्टार्ट किया, तो मतलब ये कैसे ओरिजिनल आइडिया आया कि ऐसा करते हैं? और इससे पहले भी आपका, आई बिलीव यू वर रनिंग अ कैफे, तो किस तरह की इनसाइट्स थी एंड उसके बाद ये स्टार्ट किया आपने? So I'll just give my brief background. So 2014 में I did my MBA. उसके बाद I started this cafe business. It was basically a pizzeria in Indrapuram, Delhi NCR area पड़ता है. तो मैंने वहाँ पे सिंगल कैफे से स्टार्ट किया था. माइंड में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे क्या ब्रांड बनाना है कुछ. उस समय आई वाज वेरी नाइव, तो जो लगा कि यार ये फूड का बिजनेस अच्छा लग रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विद वन आउटलेट. तो तब मैंने पिज़ेरिया स्टार्ट किया बिकॉज थोड़ा फॉरेन घूम कर आए थे एमबीए के टाइम पे, तो थोड़ा शौक चढ़ रहा था कि यार बहुत अच्छे अच्छे पिज्जा सर्व होते हैं, पास्ताज हैं, फलाफल्स, ये वो, तो उसका मुझे शौक था. तो वो मैंने रेप्लिकेट करने की ट्राई करी 5 स्टार फॉर्मेट इन अ बजट प्राइसिंग. ठीक है, तो वैसे कॉस्ट कट करके छोटा सा कैफे बनाया और एक नेबरहुड एरिया में डाला, नॉट एट अ वेरी फाइन जैसे सीपी या जीके, ऐसा नहीं गए. छोटे इंदिरापुरम के एक अच्छे मॉल था वहाँ पे, आदित्य मॉल, उसकी फ्रंट शॉप पे ही थे हम. इट वाज अ स्मॉल शॉप बट इट वाज डूइंग गुड सेल्स. सो हमने 2014 दिसंबर में स्टार्ट किया था. सो इफेक्टिवली 2015 तो मैंने 2-3 आउटलेट्स उसके और डाले, एंड वी हैड वन फ्रेंचाइज, हरिस्तो पिज़ेरिया के नाम से था हमारा. बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ना ये स्केलेबल नहीं दिख रहा है मेरे को. मतलब अंदर से रियलाइजेशन हो गई थी आफ्टर वर्किंग फॉर 2-3-4 years कि मतलब आई कैन नॉट गो टू एनी tier 3 सिटी, tier 2 सिटी, और से फॉर एग्जांपल तब नोएडा बहुत ग्रो कर रहा था. तब सिर्फ सेक्टर 18 की मार्केट चलती थी नोएडा, या मैक्स टू मैक्स सेंट्रल नोएडा. तो देन देयर वर लॉट ऑफ डेवलपिंग सेक्टर्स. तो मैं सोचा यार यहाँ पे जो बंदा आ रहा है, मान लो कि वो यूपी के किसी टाउन से आ रहा है रहने के लिए, जॉब करने के लिए, उसको थिन क्रस्ट पिज़ेरिया का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है अभी तक, बिकॉज आई वाज सर्विंग वुड फायर्ड पिज्जास. तो मैं लोगों से पूछता था, कहते थे यार तो पापड़ जैसा लग रहा है, टेस्ट अच्छा लेकिन पापड़ जैसा पेट. तो वो पेट भरने की जो वो थी ना लोगों की माइंडसेट, तो मुझे लगा कि यार मेरे को मास प्लेयर बनना है ना. Either I take this to a very premium level and outlet 8-10 खोल के I'll be satisfied, or take a bet for a mass brand. Then हमने फिर इंडियन फूड का टारगेट करा, और एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था. इट वाज अ क्लाउड किचन इन 2018, ईस्ट दिल्ली करकड़ुमा एरिया. तो वहाँ पे मैं, मेरे पार्टनर हैं, उनके साथ उनका पहले नॉनवेज का ही काम था, बट इट वाज अ नॉन ब्रांडेड टेक अवे शॉप टाइप, तो जहाँ पे लोग अपना रात को चिकन विकन खाने आते हैं. तो मैं सोचा कि इसी को ही रीब्रांड करते हैं, विल डू ऑनलाइन सेल्स अब एज अ क्लाउड किचन. तो किसी को क्या पता ही खाना कहाँ से बन के आ रहा है, बिकॉज दैट टाइम 2018 में Zomato Swiggy was onboarding like anything. They were giving low commissions, सब कुछ जो बोलो वैसे कर देते थे. तो तब हमने ऑनबोर्ड करा. सरप्राइजिंगली मतलब विद इन 1 year वी वर डूइंग सिमिलर सेल्स टू हरिस्तो पिज़ेरिया. तो आई थॉट कि यार मैं इसमें इतना कम एफर्ट डाला है, राइट, और पिज़ेरिया के बिजनेस के एक आउटलेट के लेवल के आसपास पहुंच रहा हूँ. तो आई थिंक यहाँ हम फोकस करेंगे तो विल बी एबल टू स्केल मच फास्टर. एंड देन 2019 में वी ओपनड 1-2 more franchise. Then major breakthrough came in COVID 2020, बिकॉज तब क्या है कि हम तब स्ट्रगल कर रहे थे कि फ्रेंचाइज बेचने के लिए, कि आप हमारा फ्रेंचाइज ब्रांड लो. तो तब काफी लोगों के बिजनेस छूट गए थे बिकॉज ऑफ कोविड. A lot of people had lost their jobs also, so they were looking to invest 15-20 lakhs 10 lakhs in an F&B business, because F&B at that time was already running.
डिलीवरी तो चल ही रही थी चाहे लॉकडाउन था, मतलब एसेंशियल कैटेगरी में हमारा खाना आ गया था, राइट। तो दैट वाज अ विन फॉर अस। तो उसके बाद हमने अपनी मेटा एड्स डबल कर दी बिल्कुल, क्योंकि इंक्वायरीज आने लगी कि यार अपना मॉडल बताओ, कितना पैसा बच जाएगा, कहाँ बिजनेस डाल सकते हैं। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ एरियाज टू डू बिजनेस, बिकॉज मेरे सिर्फ 3 आउटलेट थे। तो मुझे कोई भी फोन करता था कि मुझे नोएडा खोलना है, मैं कहा जी सर खुल जाएगा, गाजियाबाद खोलना है खुल जाएगा। तो वी वेंट टू डू मीटिंग्स, हम उन्हीं के वहाँ पे चले जाते थे मीटिंग्स करने की, हाँ जी सर बताओ कहाँ प्लान है, कितना बजट है आपका, ये वो। देन वी स्केल्ड, फिर करते करते फिर हमने स्ट्रक्चर्स बनाने स्टार्ट करे। तो अब जो आप ग्रोथ देख रहे हो दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ दैट 10 ईयर पीरियड, जो हमने लॉसेस करे, फिर उसके बाद मॉडल को सेट करा, देन स्ट्रक्चर्स बनाए, नाउ वी आर एबल टू स्केल मच फास्टर। So for Okay. you could say that the digital age of food delivery and all was a boon in a way. Like everyone says it disrupted people, but for you use it as a boon. Definitely, I always say to everyone कि मेरे खुद की फैमिली बिजनेस वाज डिसरप्टेड ड्यूरिंग कोविड, बट दैट वाज अ टाइम फॉर बून फॉर मी, बिकॉज उसके बाद जो डिजिटल बूम आया है, यू सी फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग, यू सी फॉर कार्स, सेकेंड हैंड कार्स, अब बिजनेस देखो बिल्कुल चेंज हो गए, फ्लिप हो गए 360 डिग्रीज। जो प्लेयर्स वेरी एडमेंट थे ना कि हम नहीं आएंगे, ऑनलाइन कमीशन देनी पड़ती है, नाउ दे आर रनिंग टुवर्ड्स स्विगी जोमैटो कि भाई हमें साइन कर लो कमीशन कम करके कैसे भी, आई वांट टू डू बिजनेस, बिकॉज बिजनेस हैज शिफ्टेड ऑनलाइन। पीपल अर्लियर जोमैटो वाज अ डिस्कवरी ऐप, नाउ इट इज अ डिफॉल्ट फूड ऑर्डरिंग ऐप। इफ यू आर नॉट विजिबल देयर, यू आर लूजिंग आउट द बिजनेस। सेम विद स्विगी, both are strong in their own areas. Yeah, it's become I think like an addiction, right? अगर मेरे फोन में ऐप है, I'm going to end up ordering it because it's an habit now. वो ड्रीम 11 जैसा हैबिट बन गया कि रात को कुछ खाने का मन, थोड़ा भी क्रेविंग है, 10 मिनट में बोल्ट डिलीवरी। एग्जैक्टली देखो, और मेरे ना एक और फिलॉसफी है कि जब बंदा पैसा कमाता है ना, सो एक फॉर एग्जांपल अब फ्रेशर बीकॉम बीटेक करा, 40-50 हजार महीना कमाना शुरू करा, उसका फर्स्ट खर्चा क्या होगा? या तो कपड़े खरीदेगा या वो खाना खाएगा। ये होता है कि यार इतना टाइम हमने नॉर्मल टाइम निकाला है, नाउ आई वांट टू ईट गुड फूड, आई वांट टू गो टू गुड कैफेज, आई वांट टू गो टू गुड रेस्टोरेंट, आई वांट गुड डिलीवरीज, कि घर पे कोई फ्रेंड भी आया है, फैमिली भी, उनको खाना खिलाते हैं यार, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी एवरीवन थिंक्स। आप रोज कपड़े खरीद सकते, आप रोज पैसा नहीं खर्च कर सकते, सिर्फ खाना पीना ही ऐसा है, या फिर एंटरटेनमेंट, you want to go to movies or you want to go to malls, but this is the first, even if you take a look at any retail market of North India or say India, major contributors will be F&B and entertainment, they drive footfalls. बंदा घर पे कैसा भी हो, मीडियम घर का है, अमीर घर का है, वो अमीर कैफे चला जाएगा, अच्छे और प्रीमियम चला जाएगा, मीडियम जाएगा, अपने आसपास के टेक अवे पे मलाई चाप एक प्लेट पैक कराएगा, 2 रुमाली रोटी के साथ खाएगा। तो वो हमारे को ऑब्जर्व करा हमने, बिकॉज वी वर रोमिंग ऑन द रोड्स, हम देखते थे कि कौन सी मार्केट में कौन सी शॉप चल रही है, क्या सेल कर रहे हैं वो, तो वहां से हमने मॉडल अपना और रिफाइन करते गए कि यार चलो इस पे फोकस करते हैं, इसको मेन्यू को ऐसे छोटा कर लेते हैं कि ये चीज बिक जाएगी। वो जो आप अभी मॉडल बोल रहे हो, तो लाइक आप समझा सकते हो कि कंपनी अगर आप जो ओन करे तो 3 स्टोर और जो फ्रेंचाइजी बेच रहे उसमें फर्क क्या होगा? लाइक आपका स्टेक भी रहता है वो कंपनीज में, या सिर्फ आप उनको मेन्यू सेटअप एंड वो सब करके देते हो? सो फ्रेंचाइज के 2-3 मॉडल्स होते हैं, फोको, मेन 2 ही हैं। फिर आपका हो गया कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोफो इज फ्रेंचाइज ओन, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, ठीक है, कि फ्रेंचाइज ने पैसा लगाया, वही ऑपरेट कर रही है, एंड वी आर जस्ट गाइडिंग देम इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट एंड एवरीथिंग। देन हो गया कि फ्रेंचाइज ओन, कंपनी ऑपरेटेड, कि आपने इन्वेस्ट करा एज अ फ्रेंचाइज एंड कंपनी इज डूइंग ऑल द ऑपरेशंस एंड ऑल। फिर एक होता है कि फीको, फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड, कंपनी ओन, कि वो सिर्फ पैसा लग गया, आपको 1% ऑफ सेल्स मिल जा रहा है, उसी के मल्टीपल स्पिन्स बन जाते हैं, बट मेजरली 2 ही है, फोफो एंड फोको। सो वी आर ऑन अ फोफो मॉडल, वी ओन द ब्रांड, वी आर सो कॉल्ड एन एसेट लाइट कंपनी, वी ओन द ब्रांड, we do franchising, we take one time fees, we help you set up the business, we help you with everything, staffing, marketing, outlet layouts, kitchen layouts, SOPs। आपको बेसिकली क्या है कि इन्वेस्ट करना है और वहां पे टाइम देना है। सो यू आर बेसिकली एन ऑपरेटर हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन आवर ब्रांड, वी ड्राइव द सेल्स, we tell you how to do promotions, we even invest in your promotions as a brand, because आप देखो कि मतलब आपने अगर मेरे गुड़गांव के किसी आउटलेट पे खाना खाया,
तो you will remember me when you come to Ghaziabad, or when you come to say Pune or Bangalore, you will remember that क्या Orange Chilla Khadak Singh, I have eaten there. तो वो branding का फायदा मिलता है, but after certain scale में 20, 30, 50 outlets के बाद फिर वो visible होने लग जाता है कि बंदे ने हाँ यार ये देखा हुआ है कहीं पे. तो वो मॉडल है हमारा. एंड इसमें बेनिफिट ये रहता है फ्रेंचाइज को कि F&B में सबसे बड़ा इशू है फूड लेबर का, कि बनाएगा कौन खाना. ट्रेन लेबर ढूंढना, उसको रिटेन करना. ढूंढने में फिर भी आसानी है, रिटेंशन इज द हार्डेस्ट पार्ट, एंड दैट वी टेक केयर ऑफ. तो हमने वो, और सेकंड क्या था कि वी वर डूइंग बिजनेस फॉर द लास्ट 13 इयर्स. तो स्विगी जोमैटो का हमने इन हाउस बहुत अच्छी टीम बना ली थी अपनी, कि हमारे को पता था कि ऑर्डर्स लेके कैसे आने हैं, हाउ टू डू ऑनलाइन मार्केटिंग. तो वो बंदे को काफी क्लियर हो जाता है कि यार ठीक है मैंने इन्वेस्ट कर दिया, नाउ आई एम जस्ट एन ऑपरेटर. मुझे मार्केटिंग की टेंशन नहीं है, मुझे स्टाफ की टेंशन नहीं है. आई हैव टू जस्ट सर्व द कस्टमर्स, पैक द फूड, डिलीवर देम, चेक कि डेली स्टाफ टाइम पे आ रहा है, खाना टाइम पे बन रहा है. दैट इज थिंग. ओके, सो मतलब मैंने एक मूवी देखी थी, आई थिंक फाउंडर करके मूवी है, मैकडॉनल्ड्स के ऊपर शायद. सो मैकडॉनल्ड्स का भी एक स्टोर होता है और फिर एक बंदा आता है, वो उनको बोलता है क्या कर रहे हो यार, मतलब इसको स्प्रेड करो, इसकी ब्रांचेस खोलो और खोलो इसको एक तरीके से. एंड फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही वो रन करता है, राइट. उसको एक बंदा आके बोलता है कि यू आर नॉट अ बर्गर बिजनेस, यू आर इन रियल एस्टेट बिजनेस और समथिंग, ऐसी कुछ स्टेटमेंट बोलता है, राइट. लेकिन उसमें एक चैलेंज तो आता होगा कि मैंने वो स्टोरी देखी है, उसमें जो जिन दो भाइयों ने वो स्टार्ट किया होता है, वो लोग हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मिल्क शेक्स जो बना रहे हैं, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ बर्गर, और उनका वही था. आई थिंक अब तो नॉर्मल है कि ये आप गाड़ी पार्क करिए और ठीक है जल्दी बन गया, लाइक जल्दी सर्विस उनका मेन वो चीज है, राइट. लेकिन फिर उन दोनों का तो यही रहता है कि नहीं हम क्वालिटी को स्केल ही नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स व्हाई वी आर हैप्पी विद दिस. दो तरह के लोग होते हैं ना कि नहीं सब मस्त चल रहा है इतना ठीक है, इतना दे दिया भगवान ने, ठीक है, राइट. फिर एक बंदा उनको आके बोलता है नहीं फ्रेंचाइजी करते हैं. तो मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया, अपना खुद का किया, राइट, तब आपके चैलेंजेस होंगे कि आपका एक लिमिटेड स्पेस है, आपने इसमें हाईएस्ट, मतलब ऑब्वियसली ये तो ऐसा भी नहीं है, डिजिटल बिजनेस भी नहीं है पहले तो, अब हो गया जोमैटो और स्विगी से. पहले तो यही फोकस होगा आपका कि इतनी मेरी टेबल्स हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी ऑलरेडी डिफाइन है, राइट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो तो पहले आपके चैलेंजेस बहुत अलग होंगे, राइट. एक स्टोर को अब 70 स्टोर्स को जैसे करते हो और एक्सपेंशन कर रहे हो, तो वो सिस्टम कैसे करते हो कि जैसे आपने बोला कोई गुड़गांव में खा के आया है तो वो नोएडा जाएगा तो बोलेगा ये देखा मैंने, वो टेस्ट सेम कैसे रखना, मेन्यू सेम, वो ब्रांडिंग तो ठीक है कलर के साथ एक बार हो जाती है, बंदे की एसोसिएट हो जाती है, राइट. जैसे डोमिनोज में जाता हूँ, मुझे पता है ब्लू और रेड कलर का लोगो और इस तरीके की. तो ये कैसे करते हो आप, मतलब ये सिस्टमैटिक कैसे करते हो कि आई फील सेम थिंग. देखो, सो आपका 2-3 पार्ट में क्वेश्चन है. फर्स्ट होगा कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी है, बिकॉज कुछ फाउंडर्स होते हैं दे आर फिक्सेटेड ऑन द क्वालिटी. और ऑब्वियसली देखो, एक ना हमारे अंदर भी एक वहम होता है, बिकॉज आई हैव रियलाइज, मेरे में भी था बहुत साल, कि जो मैं कर रहा हूँ ना वही बेस्ट हो रहा है, स्टाफ से नहीं हो पा रहा. But when you move yourself from the operations and you see from a customer's perspective or an investor's perspective, you will see things differently. आपको systems बनाने हैं, you should not be involved in the processes of doing everything on your own. वहाँ बंदा गलती कर देता है. अगर आप मैकडी वाली मूवी भी देखोगे, फाउंडर वाली, both the brothers were in the kitchen every time, managing everything. अब आप कंपेयर करो, मैकडॉनल्ड्स तो ठीक है मीडियम ब्रांड है, आप इन एंड आउट बर्गर को देखो, ठीक है, आप चिपोटले को देखो, इन्होंने क्वालिटी के साथ किस तरीके से स्केल करा है, ठीक है. आपकी वो मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगी कि यू कैन नॉट स्केल विदाउट, वी कैन नॉट स्केल और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो. ऐसा हो नहीं सकता. ऐसा मैनेज करना पॉसिबल है, सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं. उसके लिए हमने क्या करा, पहला देखो, जब मैंने फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट करी, इट वाज मोर ऑफ अ नीड टू अर्न मनी. इट वाज नॉट कि यार मेरे को एक प्रोसेस बनाना है, 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी बनाना है. इट वाज जस्ट टू अर्न मनी. आई विल टेक फीस, आई विल चार्ज रॉयल्टीज एंड ऑल. ऑब्वियसली आई वाज डिल्यूजनड कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, बट देन आई मेड द बिजनेस एंड रियलाइज कि इतना पैसा बनेगा नहीं, उसको स्केल बनाना पड़ेगा. सो फर्स्ट थिंग वी डिड वाज हायरिंग अ सेंट्रल टीम ऑफ शेफ्स. मेरे पास इस समय 20 से 25 बंदों की टीम है, who are constantly on the roads, in the outlets, managing all the SOPs. तो वहां पे आपका क्वालिटी कंसर्न काफी रिड्यूस हो जाता है. आई डोंट हैव अ सेंट्रल किचन राइट नाउ, विच ऑल द मेजर ब्रांड्स विच आर फास्ट फूड ब्रांड्स डू. इंडियन में क्या है फूड में कि पीपल लाइक लाइव फूड.
फ्रेश बना है, आपके सामने पता लगना Right. चाहिए। ठीक है, आप हाईवे से भी जा रहे हो ना, तो ढाबे ने अगर फ्रेश दाल तड़का नहीं बनाई, आपको मजा ही नहीं आएगा। राइट। तो वो बड़ा चैलेंज था। एंड सेकंड चैलेंज वाज कि हम या तो एक ही एरिया में 10 फ्रेंचाइज बेचें। फॉर एग्जांपल दिल्ली में मैंने सीपी में बेस किचन डाला एंड आई एम ऑन अ हब एंड स्पोक मॉडल कि मैंने 3-3 किलोमीटर में आउटलेट्स खोलने हैं। बट व्हेन यू आर अ यंग कंपनी, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट वेयर योर फ्रेंचाइजेस विल बी। Either you are a funded company, then you will wait for the franchisees, or otherwise you will open your own outlets because you have the Right. money in the bank, which I did not have. So I did not have the potential कि मैं एक ही एरिया में 10 आउटलेट खोलूं with confirmation. So what I did was make the backend strong. अपनी हायरिंग टीम अपनी इन हाउस कर ली हमने। All the chef hiring is done by us. उनकी ट्रेनिंग इन हाउस कर दी। Then we had a team of central chefs who were always available on call. इवन कि आपकी आउटलेट जो चल रहे हैं, मैंने आपको बताया इश्यूज होते हैं कि मान लो आज हेड शेफ छुट्टी पे चला गया, घर पे कुछ हो गया, कुछ भी हो गया दिक्कत, तो माय इन दिल्ली एनसीआर माय टीम विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट 3 आवर्स। आउटसाइड ऑफ दिल्ली एनसीआर माय टीम विल बी अवेलेबल विद द नेक्स्ट फ्लाइट और ट्रेन पॉसिबल। आई हैव दैट मच। जी, जैसे टीसीएस और इन्फोसिस में होता है ना, बेंच पे बोलते हैं कि बेंच पे रखे हैं बंदे। राइट। तो मैंने जेन्युइनली बेंच पे रखे हुए हैं शेफ्स को कि कभी भी ऑन कॉल जाना पड़े तो दे आर ऑलवेज रेडी। तो इससे 80 to 90% आई एम एबल टू सॉल्व द इशू ऑफ क्वालिटी। ऑब्वियसली 100% नो, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व बिकॉज एवरी किचन इज अ लाइव किचन। तो शेफ की स्किल और शेफ का टाइमिंग, कितना टेबल टर्न अराउंड टाइम है, कितना भीड़ लगती है उस आउटलेट पे, उस पर डिपेंड करेगा। बट 70 to 80% माई टेस्ट विल बी कंसिस्टेंट इवन इफ यू चेक ऑनलाइन रेटिंग्स ऑफ आवर आउटलेट। स्विगी जोमेटो, देखो आजकल क्या है ना कि बिल्कुल क्लियर है, स्विगी जोमेटो खोल लो, गूगल रेटिंग खोल लो, यू विल बी एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर। तो मेरे अभी एक्चुअली 82 आउटलेट्स आर लाइव as on date. Only and only I think 12 or 13 outlets are there which are below 3.9 of ratings. Okay. All the outlets rest are 3.9 and 4 above. And this is Nice. all organic ratings. अब आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। 2016-18 वाला टाइम अलग था, यू कुड डू मैनिपुलेशन इवन टिल 2020-22 तक। उसके बाद तो एल्गो इज वेरी स्ट्रिक्ट, दे डिटेक्ट फेक ऑर्डर्स, दे डिटेक्ट फेक रिव्यूज। अब आप उसको गेम नहीं कर सकते इजीली या कर ही नहीं सकते हो आप, बिकॉज इट विल गिव मोर वेटेज टू एक्चुअल ऑर्डर्स, कस्टमर्स हु आर ऑर्डरिंग फ्रॉम द लोकल लोकेलिटीज, हु आर ऑर्डरिंग फ्रॉम नियर बाय रेस्टोरेंट्स, दे हैव देयर प्रोफाइल्स। तो ये हमने सॉल्व करा। अब जो फ्रेंचाइजिंग का जो बेनिफिट है वो 30-40 आउटलेट्स के बाद निकल के आने लगता है, बिकॉज यू हैव द मनी to make the systems. Initially when we were 10-20 outlets, we were already on the run कि यार अब ये फट गया, अब ये हो गया, इस आउटलेट पे प्रॉब्लम आ गई, शेफ नहीं है भेजने को। Now we have a team of chef reserve. अब देखो वो चिकन एग वाली प्रॉब्लम है, पहले क्या आया, पहले पैसा आएगा या फिर पहले सिस्टम बनेंगे। तो वो आपको टाइम निकालना है कैसे भी, 1-1.5 साल का जो भी स्ट्रगल टाइम है आपका, वो आप निकालो, कैसे भी निकालो। उसके बाद फिर अपने आप सिस्टम बनने लगते हैं, फिर पैसा फ्लो होने लगता है। तो मतलब मेन इनसाइट कंक्लूजन ये है कि सिस्टम बना के ही चलता है इस गेम में भी, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ चीज लगती है ना कि बहुत सारे ढाबे हैं पूरे इंडिया में, राइट? कि सो सबका अपना अपना टेस्ट है। वही मैं पूछ रहा था कि जब सबको यूनिफॉर्म करना हो तो किस तरीके से करते हैं, राइट? सो वही नहीं, अब आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। व्हेन आई वाज ओनिंग माय पिज़्ज़ेरिया, मेरे पास पैसा नहीं था मैनेजर को देने का। मतलब मंथली वी वर डूइंग 7-8 lakhs ऑफ सेल, जिसमें से 1 lakh समथिंग तो रेंट ही था मेरा। तो आई हैड टू कट एवरी कॉस्ट। आई वाज इन्वॉल्वड इन इवन पैकिंग द ऑर्डर्स, सर्विंग द कस्टमर्स, एवरीथिंग। ऑल द टाइम वेंट इन देयर ओनली। जब अब मैं आज की बात करता हूँ, मेरा उससे कितने एक्स रेवेन्यू है, कितने ही एक्स मेरे को प्रॉब्लम्स हैं और कितने ही मेरे पास सॉल्यूशंस है, बिकॉज नाउ आई एम डिटैच फ्रॉम द ऑपरेशनल थिंग। तो वो फाउंडर को करना बहुत जरूरी है, एनी बिजनेस, स्पेशली द ऑपरेशंस हैवी बिजनेस, कि जब तक आप बाहर आके समझोगे नहीं ना प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है और वो कैसे ठीक होंगी, आपकी खुद ऑन फ्लोर रहने से वो सॉल्व नहीं हो सकता। माइक्रो और मैक्रो वाली बात है, मतलब बिल्कुल मैक्रो पे आपको जाना ही पड़ेगा, स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग सिस्टम। जैसे अब सिस्टम्स का है कि हमने स्विगी जोमेटो के लिए अलग टीम बना दी, हायरिंग ऑफ द शेफ्स के लिए वी हैव मेड अ डिफरेंट टीम, अकाउंटिंग इज डिफरेंट, मार्केटिंग इज डिफरेंट। पहले एवरीथिंग वी वर डूइंग ऑन आवर ओन, एवरी फ्रेंचाइज हैंडलिंग, एवरी फ्रेंचाइज मीटिंग की टीम अलग है। तो वो धीरे यू रियलाइज कि योर टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर गिविंग टू राइट नाउ। वो समझ में लग जाता है।
आई थिंक आपने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया। लाइक हमारे इधर एरिया में बोलते हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस में वैसा होता है कि 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था, ये 26 लाख का लॉस कैसे हो गया। बट आई इसमें थिंक व्हेन यू हैव कैसे हो जाता है वो प्रोसेसेस एंड ऑल, आई थिंक उससे ये सब हो सकता है फाइट। देखो हाँ, मैं जो पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, आई एम फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ मेकिंग अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। अब कई ओनर्स होते हैं कि हु आर वेरी हैप्पी विद 2-3 रेस्टोरेंट्स एंड दे आर डूइंग फिनोमिनल। ऐसा नहीं कि क्या पता कई लोग हमसे भी ज्यादा अच्छा सिस्टम बना के बैठे हैं इन ओनली 2-3 आउटलेट्स, बट दैट इज देयर कॉल। मैं उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता था, तो मैंने अपनी कॉल ली कि आई हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम द ऑपरेशंस एंड आई हैव टू pinpoint each and every cost which is associated with the restaurant business। उसको कैसे कम करना है, कैसे रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, कैसे ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे डिपेंडेंसी मैनेज करनी है, बिकॉज इन अर्लियर इयर्स वी वर वेरी डिपेंडेंट ऑन स्विगी जोमैटो। एज आई टोल्ड यू, वी ओपनड विद अ क्लाउड किचन, तो 90% सेल्स उनके ऊपर था मेरा। आफ्टर द कोविड वी रियलाइज दैट स्विगी जोमैटो पे अब लेवरेज ज्यादा आ चुका है, मतलब दे आर आर्म ट्विस्टिंग द रिटेलर्स जो बात जेन्युइन है, कमीशंस, एड्स, फिर कंपलसरी डिस्काउंट्स। वो क्या करते हैं कि अब आपके कॉम्पिटिटर पे जाके बोलेंगे सर ये डिस्काउंट चलाओ, यू विल गेट मोर ऑर्डर्स। देन मार्केट स्टार्ट्स अडैप्टिंग टू दीस डिस्काउंट्स कि भैया उस पे इतने ऑर्डर आ रहे हैं तो व्हाई आर वी लेफ्ट बिहाइंड। वो कहेंगे सर 10 रुपए तो एक्स्ट्रा पड़ रहा है पर ऑर्डर, आप क्यों नहीं करते हो। तो दिस इज अ विशियस सर्कल। तो यू हैव टू मेक योर ब्रांड कि आपको 20-30 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट ना देना पड़े। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग व्हिच यू मेक स्टेप बाय स्टेप। ओके एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मतलब हमने बड़े स्केल की बात कर ली, लेकिन जैसे मैंने मतलब ये स्टार्ट किया था सेगमेंट, मतलब मेरा मेन फोकस था जो सबकी एस्पिरेशन होती है ना कि आज गए खाने और 2000 का बिल दे दिया, और सोचते रहते हैं ना लोग कि मैंने 2000 दिए, दिन में कितने लोग आते हैं। तो इसका मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स या कह सकते हो एक्सपेंसेस रेवेन्यू के टर्म्स में कैसे चलता है। लाइक ऑब्वियसली हर जैसे कोई मोमोज का स्टॉल है उसका अलग होगा, कोई फैमिली रेस्टोरेंट है उसका अलग होगा, एक कैफे होगा उसका अलग होगा। तो ये चीजें मतलब किस किस चीज के एक्सपेंस होते हैं और कितना कितना परसेंट रहता है और बचता कितना है। जैसे टेक कंपनी होती है उनका मार्जिन बहुत हाई होता है, राइट। तो इस केस में कैसा रहता है अलग अलग, जैसे स्टार्ट करते हैं हम फैमिली रेस्टोरेंट से, कह सकते हो। मैं आपको पहले नॉर्थ इंडियन ही पकड़ते हैं जी, मैं आपको हाँ मतलब वो देखो मार्जिन स्ट्रक्चर ना सबके मोर और लेस 2-3% का वेरिएंस है, बाकी सबका सेम है। ओके अब मैं आपको उस पर डिवाइड कर देता हूँ। सो देयर आर 3-4 फॉर्मेट्स इन एफएनबी। वन इज टेक अवे फॉर्मेट कि आपका एक रिटेल स्टोर है, यू आर डूइंग डिलीवरीज प्लस देयर आर सम कस्टमर्स हु आर गेटिंग देयर ऑर्डर्स पैक्ड एंड हैविंग देयर। टेक अवे फॉर्मेट हो गया। देन देयर इज अ कैजुअल डाइनर, जैसे आप नॉर्मल रेस्टोरेंट देखते हैं अपने आसपास की 40-50 बंदों की कैपेसिटी है, अंदर खा रहे हैं बंदे, डिलीवरीज भी चल रही हैं और अंदर भी खा रहे हैं बैठ के बंदे, प्रॉपर इंडोर एसी डाइनिंग। देन देयर इज अ क्लाउड किचन मॉडल व्हिच इज लाइक किचन आपकी बिल्कुल हिडन है एंड यू आर डूइंग ऑनलाइन ऑर्डर्स और डायरेक्ट कॉल ऑर्डर्स, ठीक है। एंड देन देयर इज अ फाइन डाइन फॉर्मेट, ठीक है, इसमें कि आप प्रॉपर कोई डिलीवरीज पे फोकस है ही नहीं है उनका, दे आर जस्ट गिविंग यू एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस ऑफ डाइनिंग, जैसे आपने बॉम्बे का नाम लिया है ना। एंड देन वन इज व्हिच इज वेरी ग्रोइंग वेरी फास्ट इज हाईवे मॉडल कि आप हाईवे पे गाड़ी लगा करके ट्रैवलिंग में खाना खा रहे हो, एंड व्हिच इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आपने देखो जब से गडकरी जी ने हाईवेज बनाए हैं, थोड़ा सा आजकल दिक्कत चल रही है उनकी, बट तो हाईवे बिजनेस काफी बूम कर रहा है। तो ये सारे मॉडल्स हैं। अब इनका मैं आपको रेशियो बता देता हूँ कि कैसे रहता है। देखो रेस्टोरेंट एज अ बिजनेस इज, अगर मंथली में एबिटा की बात करूँ तो 20-25% इज इनकम मॉडल है ये, ठीक है, अगर अच्छा चलता है तो। फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख की सेल करते हैं तो आप अच्छे से कॉस्ट मैनेज करते हैं तो 2 लाख रुपए पर मंथ आप सेव कर सकते हो। नाउ मेजर थिंग इज व्हाट आर योर कॉस्ट। हाँ, वो 8 लाख किधर रहेंगे। हाँ, अब क्या होता है कि ये तो हो गया एक मॉडल जिसमें कि आई एम अज्यूमिंग एवरी रुपी ऑफ योर सेल्स इज डूइंग डायरेक्ट सेल्स, कि आपका कोई इसमें स्विगी जोमैटो कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो 10 लाख का 10 लाख आपका डायरेक्ट सेल्स से कस्टमर खा के किया, एंड यू आर इजीली एबल टू सेव 1.75 to 2.5 लाख रुपीस और एन एवरेज से 2 लाख रुपीस, ठीक है। अब इसमें ये हो गया आपका टेक अवे मॉडल। अब टेक अवे में बट होता क्या है कि आपका रेवेन्यू स्विगी जोमैटो से भी आता है, तो अज्यूमिंग अ 50-50% स्प्लिट कि आपका डायरेक्ट सेल से 50% आ रहा है 5 लाख रुपए एंड 5 लाख यू आर डूइंग विद स्विगी जोमैटो, देन योर एवरेज मार्जिन कम्स डाउन टू 12-13%, बिकॉज
commissions and ads you have to pay on Zomato and Swiggy. So every 1 rupee, so 100 rupees say, every 100 rupee sales done on Swiggy Zomato gives you 70 rupee or 68 rupee. 32 rupees जाता है उस पे. ओके. और पहले क्या होता था ये रेट? पहले तो देखो, पहले अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं तो 25-26% मैक्स जाता था. अब वो 32-35 तक भी आ गया है. सबसे पहले इशू क्या होता है, मैं आपको उसका भी बताता हूँ कि जो रेस्टोरेंट का मार्जिन स्ट्रक्चर है ना, लोग क्या कहते हैं कि 10% रेंट होना चाहिए, 15% सैलरीज, ठीक है, ये एक आइडियल मॉडल है. बट एक्चुअली में होता क्या है, वी डू रिवर्स कैलकुलेशन. हम कहते हैं कि हमारी एक फिक्स कॉस्ट पहले आप सेट कर लो. फॉर एग्जांपल रेंट इज 1 लाख रुपीज, सैलरी इज 1.5, 2.5 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल मोटा मोटा उतना आएगा ही आएगा, मान लो 20,000 रुपये आता है. देन यू हैव मिसलेनियस कॉस्ट, कुछ रिपेयर हो गया, कुछ टूट फूट हो गया, 20,000-30,000 rupees. So 3 lakh rupees is your fixed cost. Even if you do zero sales, you have to bear this money. अब होता क्या है कि people think कि मैंने अगर 4 लाख का भी सेल कर लिया तो भी मैं उसका 20% बचा जाऊंगा. But if your fixed cost is 3 lakh rupees, you cannot save money on 4 lakhs of sale. सारा इशू यही है. जैसे आपने बोला था कि 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 26 का लॉस कैसे हो गया, वो ऐसे ही होता है. Right. People do not calculate the fixed cost associated with opening a restaurant. They only do is कि 1,000 रुपए का मैंने खाना खाया, तो they assume कि हर कोई बंदा 1,000 का ही खाना खा रहा है. And they go on Saturdays or Sundays, तो they assume कि 7 days of restaurant is like this only. वो तो घंटे की कैलकुलेशन हो जाती है. वो तो समोसे वाले पे भी 1-1 लाख की वो बना देते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं इतनी मेहनत करके, एंड कोई अगर रोड पे समोसे बेच रहा है तो उसका मैथ्स भी 1 लाख पार निकल जाता है, 1 लाख अर्निंग होगी. तो आप किसी समोसे वाले से पूछिए, किसी मिठाई वाले से पूछिए, किसी रेस्टोरेंट से पूछिए, 20 से 25% इज अ गुड मार्जिन. If you're doing exceptional sales, then your margin goes to 30-35% also. But this is very exceptional case, like top 5%, 7% of your restaurants. ठीक है, वो उसका रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल योर फिक्स कॉस्ट इज 3 लाख रुपीस एंड यू आर डूइंग से 20 lakhs ऑफ सेल्स. तो उसमें क्या होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है दैट इज 30 to 40% डिपेंडिंग ऑन योर फॉर्मेट. अगर आप मास फॉर्मेट में हैं जैसे हम हैं तो 38 to 40% कॉस्ट आता है ऑफ योर रॉ मटेरियल. सो एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल you have to give expense of 35 to 40 rupees. This is variable cost. आपका वेरिएबल कॉस्ट इतना ही रहता है. अगर आप फाइन डाइनिंग में जाते हैं तो वो 28-30% की रेंज में आ जाता है बिकॉज द प्राइस इज हायर एंड यू हैव टू बियर एक्सपेंसेस ऑन अदर थिंग्स आल्सो बिकॉज उसमें सैलरीज बढ़ जाती हैं. आपके मैनेजर्स आएंगे, वेटर्स आएंगे, अच्छे शेफ्स आएंगे. मास मॉडल्स में क्या होता है कि शेफ्स की भी एक लिमिट होती है कि मीडियम लेवल के शेफ्स होते हैं, मीडियम लेवल के सर्वर्स होते हैं, रेंट्स कम होते हैं. सो यू डू योर एक्सपेंसेस ऑन दैट लेवल. ठीक है, तो इशू ये है कि इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरी क्या फिक्स कॉस्ट है और मेरे को ऑन एन एवरेज कितने बिल काटने पड़ेंगे पर डे एवरेज. सो फॉर एग्जांपल सैटरडे संडेज में आपके 100 बिल्स कट रहे हैं पर डे, बट आपका मंडे ट्यूसडे विल बी 30-40 बिल्स और 50 बिल्स. तो आपको वो कैलकुलेट करना है कि मेरी वीकली एवरेज क्या आती है. कि आपने सैटरडे या संडे को 100 बिल काट दिए तो क्या आपके वीकली 700 बिल कट जाएंगे? इम्पॉसिबल है. Not possible, right? Not possible. Even if you're in a corporate area, then Monday Tuesdays will be heavy and weekends will be lower. ये होना ही है आपका, क्योंकि वो आपका पे लंच बिजनेस आ जाएगा, देन फिर जो फैमिली आउटिंग का बिजनेस है वो नहीं आएगा आपके पास रात वाला. राइट. तो आपको देखना है कि मेरी एवरेज मान लो कि मेरे को 400 बिल्स पर वीक में काट सकता हूँ और फॉर एग्जांपल 500 रुपए का मेरा एवरेज ऑर्डर साइज है, दैट इज 2 लाख रुपए का आपका हिसाब हो गया पर वीक का. है ना? तो उसके हिसाब से आपने देखना है कि मैं कितनी सेल्स कर सकता हूँ. A lot of people do mistakes in calculating the average order size also. For example, आप गए, आपके पास अच्छा पैसा है, आप स्पेंड करते हो, आप सूप भी ऑर्डर करते हो, ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते हो, डेजर्ट्स भी ऑर्डर करते हो, एंड यू स्पेंड फॉर एग्जांपल 1000 per person on an average restaurant. You assume कि जितने लोग आएंगे वो 1000 ही खर्च रहे हैं, which is not true. So average if says 500 or 600, तो then you have to do your reverse calculation कि मैं कितने बिल्स काट सकता हूँ. And the best way to do is वहाँ पे जितने रेस्टोरेंट्स आपके कंपटीशन में हैं उनके साथ आप विजिट करना शुरू करो. आप उनके मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ होता है, यू ऑब्जर्व कितने के बिल्स कट रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने लोग की टेबल्स आ रही हैं, या फिर इट्स अ टेक अवे रेस्टोरेंट तो कैसी गाड़ी आ रही है या इंडिविजुअल बंदे आ रहे हैं. बिकॉज जितना बड़ा ग्रुप आएगा खाने उतना बड़ा बिल बनेगा आपका. राइट.
तो वो आपको सब कैलकुलेट करना है बिफोर गोइंग इनटू द रेस्टोरेंट बिजनेस. बट ऑन एन एवरेज मास रेस्टोरेंट्स, आई एम गिविंग अ बॉलपार्क फिगर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 400 to 600 rupees per order. Okay. This is not per Okay. person, per order. This is for deliveries. If you go for dining, then 800 to 1200 rupees is an average for a North Indian restaurant. Okay. जी. अब And कैफे मॉडल भी है, वो भी सिमिलर उस पे ही है आपका. ओके. एंड सो एक और क्वेश्चन था कि अभी रिसेंटली मतलब आई थिंक फंड्स वगैरह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं रेस्टोरेंट चेन्स वगैरह में, या एक्विजिशन भी प्रोबेबली Burma is a very famous one, right? In Bombay especially, where जी. pure veg restaurant that has been funded and has been doing superbly well. बिल्कुल बिल्कुल. अभी तो वो मतलब ऑपरेशन ये कब से स्टार्ट हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब या ये अनऑर्गेनाइज्ड को बहुत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अब ऐसे ही, मतलब कह सकते हो ये ऐसा साइकिल आ गया है कि दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज नाउ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. बिल्कुल. देखो, चाहे वो बर्मा है, चाहे वो हमें एलियन काइंड है, बोबा भाई, यू टेक एनी ब्रांड, एवरीबडी इज गिविंग अ ब्रांड नेम टू लोकल प्रोडक्ट्स. तो जैसे बर्मा हैज गॉन इनटू बर्मीज कुजीन, नीश कुजीन. तो नीश में यू हैव द चार्जिंग कैपेसिटी. आप सेम मान लो नूडल्स या कुछ भी आप सर्व कर रहे हो, तो वो 250 का मार्केट में है, तो आप 400 का भी बेच सकते हो, बिकॉज यू आर गिविंग दैट एम्बियंस एंड दैट एक वाइब पूरा दे रहे हो आप कस्टमर को. हमारा भी यही है कि हम आप अगर दाल मखनी 180 रुपए की 200 की मार्केट में है, तो वी कैन चार्ज 220 रुपीज 230 रुपीज, बिकॉज वी हैव मेड अ ब्रांड ऑफ अ नॉर्मल रेस्टोरेंट बिजनेस. सेम विद एवरी ब्रांड. एंड जैसे आई टोल्ड यू, इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग. मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के पास जब भी पैसा आता है, यू सी tier 2-3 cities, रियल एस्टेट हैज गॉन थ्रू द रूफ. व्हाई? बिकॉज बिजनेस पे पैसा बन रहा है. कमर्शियल शॉप का, I'll give you example, we opened in Kanpur in 2022. The rent was 90,000 per month. It was considered expensive कि 90,000 रुपए कानपुर में दुकान खोलोगे. Yeah. Same shop, same location is now trending at 1,40,000 to 45,000 rupees in 3 years, 3.5 years. तो हो क्या रहा है कि चाहे वो वेल ट्रेवल्ड लोग हैं जो अपने होम टाउन में जा रहे हैं, या फिर अगर आप मेट्रो सिटीज की भी बात करते हो, तो अब लोगों के पास इंटरनेट के थ्रू वैसे जॉब्स पे एक्सपोजर बहुत अच्छा हो गया. दे नो डिफरेंट कुजीन्स. आप कोरियन कल्चर देखो, के पॉप कल्चर, जितने F&B ब्रांड्स हैं, दे हैव लॉन्च वन और द अदर वेरिएंट ऑफ कोरियन स्पाइसेस और कोरियन बर्गर्स और कोरियन फूड. KFC, मैकडॉनल्ड्स, किसी को उठा के देख लो आप. एंड आप इवन की FMCG प्रोडक्ट्स में देख लो, आप नूडल्स में देख लो, किसी चीज में देख लो कि यू विल सी कोरियन स्पाइसेस में कोरियन स्पाइसेस के नाम से लॉन्च कर दे रहे हैं. एंड पीपल आर रेडी टू पे प्रीमियम. अब ऑनलाइन भी a lot of business has shifted to quick commerce apps. वहां पे बंदा 10-20 रुपए नहीं देख रहा. कन्वीनियंस चार्ज लग रहा है, डिलीवरी चार्ज लग रहा है, लगने दो. सो मतलब इंडिया तो एक्चुअली स्पाइसेस का वो था कि हम हब है दुनिया के लिए, राइट? सो मतलब ऐसा हो रहा है कि कह सकते हो जैसे नूडल्स की भी पहले मैगी थी, राइट? एक ही ब्रांड था, नेस्ले. देन ये आ गया, yippee नूडल्स को बोलने लग गए कि वो ऑरेंज वाली मैगी, ठीक है. अब मैं देखता हूँ वैसे स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह पे काफी अलग अलग हैं, मतलब ब्रांड्स हैं स्पेसिफिक. ये वाली स्पाइसी हो गई, और तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब प्रीमियमाइजेशन हो रहा है जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स थे प्रोबेबली. प्रीमियमाइजेशन ऑफ हमारे घर पे सिर्फ अभी वो मैगी नहीं, वो रामेन बनता है. 200 रुपए का एक पैकेट आता है नूडल्स का. एग्जैक्टली. और देखो, प्रीमियमाइजेशन ऑफ निशेस हो रहा है. जहां जहां ऑनलाइन ने कैटेगरीज अनलॉक करी हैं, यू सी एनी बिजनेस. आपने जैसे डोमिनोज का एग्जांपल लिया था कि डोमिनोज इज नाउ मोर ऑफ अ tier 2 ब्रांड. इट इज नॉट बिकॉज देयर प्रोडक्ट क्वालिटी इज फॉलन. वो सेम चीज ही बनाई जा रहे हैं. दैट इज देयर इशू. करेक्ट. मार्केट हैज मूव्ड फ्रॉम चीज बर्स्ट टू मोज़रेला, देन टू आपका बुराटा, देन फेटा चीज. मार्केट वहां चली गई है. आपको लग रहा है उसका प्रोडक्ट इंफीरियर हो गया, उसका वही चल रहा प्रोडक्ट. करेक्ट. ये इशू आ गया. और एंड पीपल आर रेडी टू पे प्रीमियम. इफ यू गो टू से दिल्ली, लियोज है, आप मालवीय का चले जाओ, आई थिंक ई से कौन सा पिज़्ज़ेरिया था, आई फॉरगॉट द नेम. मतलब एवरेज पिज्जा 700-800 रुपए का इज ट्रेंडिंग. इजीली डोमिनोज का हाईएस्ट पिज्जा है 700-800 रुपए. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्रांड एंड दैट लेवल ऑफ ब्रांड की जिसकी एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की लोग तारीफ करते हैं, उनसे सीखते हैं कि हाउ आर दे एबल टू मैनेज दिस स्टोर इकोनॉमिक्स. टर्न अराउंड टाइम बहुत अच्छा है ना. ऑनलाइन ऑर्डर करो आप, डिलीवरी लो, ऐसे भी लोग बहुत अच्छा है. बट
प्रीमियम नहीं कर पा रहे, वो दे हैव ट्राइड एन नंबर ऑफ टाइम्स। उन्होंने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ास भी लॉन्च करे हैं, हाँ, ठीक है, आप उन्होंने टाकोस भी लॉन्च करे, रैप्स भी लॉन्च करे, एंड दे हैव डन वेरिएशंस ऑफ चीज आल्सो, बट वो चीज नहीं है, बिकॉज न्यू पिज़ेरियाज आर गिविंग एक्सपीरियंसेस। आप 30-40 सीटर एक पिज़ेरिया बना रहे हो, आपको पास्ताज भी सर्व कर रहे हो। अब नाउ इफ यू सी पास्ता ऑफ डोमिनोज और पास्ता ऑफ अ लोकल पिज़ेरिया वाला मच बेटर पास्ता सर्व कर दे रहे हैं, एंड 400 to 500 रुपीज का पास्ता इजीली बिक जा रहा है। नॉर्मल पास्ता भी 350 रुपीज का बिक जा रहा है आराम से, एंड व्हेन आई यूज्ड टू डू और बिजनेस पास्ता प्राइस 200 रुपीज। राइट तो राइट, वो वही चीज है का मतलब बेनिफिट जी। मतलब गेम इज स्विचिंग टू प्रीमियमाइजेशन, और जो नई कैटेगरी है और वो अटक गए हैं प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो और देखो, आपको मास के साथ कॉम्पीट करने के लिए ना मास वाली प्राइसिंग चाहिए, विच अ स्मॉल ब्रांड डज नॉट हैव। अब जैसे लापिनोस पिज्जा है, इट इज द ओनली कॉम्पिटिटर फ्रॉम इंडिया who is competing with Domino's at a certain level, not at a direct level, at a certain level. Even Pizza Hut has been sold to a new owner, और वो प्रीमियमाइजेशन लेकर आ रहे हैं कि वापस से फैमिली डाइनर और वैसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेक द मनी इन मास सेगमेंट। तो मास के साथ कॉम्पीट करना, जैसे मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज डूइंग चॉकलेट बिजनेस, ही टोल्ड मी कि जब तक तो मैं आलमंड्स और ये सब की चॉकलेट्स के वेरिएशंस बेच रहा था मार्केट में, 100, 150, 200, 250 के आराम से बिक रहे थे। व्हेन आई ट्राइड टू कॉम्पीट विद कैडबरी एट अ स्टोर लेवल, आई गॉट बर्स्ट कि उतना मार्केटिंग स्पेंड लगाना पड़ता है, उतना पुश लगाना पड़ता है, डीलर मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, कि आपके पास वो फंड्स ही नहीं है। और ब्रांड रिकॉल विच लोग नॉर्मल ब्रांड जो 10, 20, 50, 100 रुपए का सेल कर रहा है, उसका ब्रांड रिकॉल और आपके ब्रांड रिकॉल में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो बेटर टू टारगेट ऑन प्रीमियम निशेस। हाँ, अगर आपका मॉडल QSR है, जैसे मान लो एलियन काइंड इज डूइंग, बोबा बाई इज डूइंग, उनका क्या है कि जैसे वाव मोमोज इज डूइंग 2-3 पर्सन्स इन द किचन एंड दे आर चर्निंग ऑर्डर्स। इफ यू हैव परफेक्टेड दैट economics, then it is very good to go, but perfecting that takes a lot of time, and rentals are very very huge in certain pockets जहाँ पे आपको बिजनेस डालना ही डालना पड़ेगा जहाँ बिजनेस है, तो वो आप मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है फॉर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर और स्मॉल टीम। राइट। ओके ओके, सो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लाइक मान लो आप फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो एंड यू हैव 20 lakhs 2026 में, एंड आपने इसी इंडस्ट्री में करना है कि आप उस कैटेगरी के हो कि आप देखते हो यार ये 1000 का बिल वाला, ठीक है, आपका वही एस्पिरेशन ये है और पैसे हैं 20 लाख, तो आप क्या बिल्ड करोगे, लाइक अब यहाँ से, और कैसे करोगे, मतलब कैसे एलोकेट करोगे इस कैपिटल को और किस चीज में करोगे? टफ क्वेश्चन हो गया, मैंने अभी कभी उस तरीके से सोचा नहीं कि मैं फिर से दोबारा से क्यों स्टार्ट करूंगा, बट हाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर 20 लाख का मुझे एक ही बिजनेस डालना है तो आई विल गो फॉर अ प्रीमियम बेकरी प्लस पिज़्ज़ेरिया बिजनेस, ठीक है। बेकरी अपने आप में भी कर सकता हूँ, पिज़्ज़ेरियाज ना करूँ कि ओनली बेकरी है, बिकॉज उसमें आई कैन सी ह्यूज पोटेंशियल। आज के टाइम पे केक का डिफरेंशिएशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, पहले वो 400-500 केक कटते थे, वही सबके वहाँ घर पे कटते थे, अब चीज केक्स, फॉन्डू केक्स, एवरीथिंग हैज टर्न्ड द इकोनॉमिक्स। आप 1000, 1500, 2000 और डिजाइनर केक्स आर रिटेलिंग एट पर केजी ऑफ 2000 रुपीज, और मिनिमम 2 किलो का बनता ही है वो, 2.5 किलो का, तो वो आप एक बार वो एक्सप्लोर कर सकते हो। देन पिज़्ज़ेरिया एंड कॉफी शॉप इज अ गुड मॉडल, बट कीप द कॉस्ट लो। प्रीमियम पिज्जास लाइव बन रहे हो आपके सामने, साथ में कॉफी और कुछ आपका 1-2 पास्ता टाइप यू वांट टू गिव, वाला मॉडल भी ठीक है। इफ आई गो फॉर इंडियन मुझे करना है, तो मुझे बिरयानी कबाब्स का लाइव मॉडल इज अ वेरी गुड मॉडल, जिसमें कि आपकी फ्रेश कबाब्स और तंदूरी टिक्का, पनीर वगैरह सब लाइव बन रहा है आपके सामने, एंड यू हैव सम बिरयानीज ऑल्सो जो कि 2-3 मटके में रखी हुई हैं, एंड यू आर चर्निंग आउट एट अ वेरी फास्ट स्पीड। वो बहुत अच्छा मॉडल है जो स्केल हो सकता है, दैट इज चीपर मॉडल ऑल्सो बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर मच किचन इन्वेस्टमेंट। सो वो विजिबिलिटी वाली बात है, जैसे मतलब चाय का कप है नॉर्मल, उससे लेते हैं कितने 10 रुपए का, फिर उसको कूलर में डाल दो, बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल। उस 100 रुपए आपको में यही देखना है कि आप कैसे प्रीमियमाइज कर सकते हो एक्सपीरियंस को, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है रियल एस्टेट, वो फाउंडर मूवी में भी दिखाया। आई फाइट अ लॉट ऑन ट्विटर विद अ लॉट ऑफ पीपल कि भाई मुझे बोलते हैं कि प्रोडक्ट इज द बेस्ट। सी, प्रोडक्ट
तो बेस्ट होना ही चाहिए ऑब्वियसली. why would I come to you if your product is not good? But product is not the differentiating factor. आप से अच्छे शेफ बैठे हैं होटल्स में जो 30-50-70 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और आपसे 10 गुना अच्छी बिरयानी बना सकते हैं. But why are they not able to sell? You need to understand this is a real estate business. आप कितनी रियल एस्टेट में कितने स्क्वायर फीट्स में किचन बना सकते हो, कितने में डाइनिंग बना सकते हो, कैसी विजिबिलिटी ले सकते हो स्टोर की. आई कैन टेल यू n नंबर ऑफ ब्रांड्स जिनका लोकेशन ए और लोकेशन बी में जमीन आसमान का सेल्स का फर्क है. इवन हमारा है. मेरे अगर 80+ आउटलेट्स चल रहे हैं आज, नॉट एवरी आउटलेट इज डूइंग सेम सेल्स. जिसकी लोकेशन अच्छी है वो इजीली डूइंग 1.5x ऑफ सेल्स. एंड दिस इज अ वॉल्यूम बिजनेस. मेरे फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, मुझे उतना स्पेंड करना ही है. अब उसी में मैं अगर 1.5 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन गोज फ्रॉम 8-10% टू सीधा 20-22%. आइडियली जो आपने बताया था पीक. बिल्कुल. और आप और अच्छा कर लेते हो तो 25-30% की रेंज में भी जाते हो. बट दीज आर एक्सेप्शनल. मतलब कई लोग हमारे भी ब्रांड में काफी लोग कर रहे हैं. बट इफ फ्रॉम 80 आउटलेट्स आई वुड से 8-10 कर रहे होंगे जो 25-30% की रेंज में प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं. बाकी एवरेज 15-16% की रेंज में ही चलता है. तो वो समझना एक न्यू एंटरप्रेन्योर को बहुत जरूरी है. इवन कि आप एक रेडी भी लगाते हो तो रेडी लगाने के लिए भी आपको फुटफॉल देखना बहुत जरूरी है. वेयर द पीपल आर मूविंग, कहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, कहाँ पे पार्किंग की स्पेस है. आज बंदा एक कमाई गिनता है कि यार एक एम्प्लॉय से बढ़िया तो एक रेडी वाला है जो रोज के 20,000 का गल्ला कर लेता है. वो 20,000 गल्ला कैसे कर पा रहा है पहले वो भी देखो आप. और उसका क्या वो ऑथराइज बिजनेस है. कल को एमसीडी का कोई भी ट्रक आके उसको उठा के ले तो नहीं ले जाएगा. आप कार्ड्स आपकी लगती हैं, कॉर्पोरेट टावर्स में कार्ड्स लगती हैं. इट्स अ फिनोमिनल बिजनेस. बट आप जाओ कॉर्पोरेट टावर, मुझे कार्ड लगानी है, आपको कोई लगाने नहीं देगा. यू डोंट हैव अ बिजनेस, यू डोंट हैव अ ब्रांड टू शो. आज डोमिनोज को कहीं भी आपने देखा होगा काफी जगहों पे कॉर्पोरेट में कार्ड्स लगती हैं उनकी, डोमिनोज की या और भी जितने मेजर ब्रांड्स हैं. वाओ मोमो ले लो, बर्गर ब्रांड बर्गर सिंह. तो वो ब्रांडिंग की उस पे लगती है. तो आपको बिजनेस उतना परफेक्ट करना है अपना कि आपको विजिबिलिटी हर जगह से मिल सके. एंड ओके, सो अब क्वेश्चंस ले लेते हैं. आई थिंक एक तो 20 लाख के ऊपर ही दोबारा क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज आल्सो एक्सप्लेन थ्रू अ बेसिक एग्जांपल कि हाउ 20 लाख इज एलोकेटेड. जैसे अभी हमारी जेब में है, हाउ मच फॉर स्टाफ, लाइसेंस, लीज, डिपॉजिट, कैश बर्न फॉर फ्यू मंथ्स. मतलब कैश बर्न का साइकिल कैसे चलेगा. आई थिंक इसको बेकरी बिजनेस में ले लेते हैं. सपोज बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड 20 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये साइकिल कैसे होगा. सो मैं एवरेज लेता हूँ. बेकरी, पिज़्ज़ेरिया, कोई भी हो बिजनेस, ऑन एन एवरेज 5 to 6 लाख रुपीस आपका किचन में जाएगा इन्वेस्टमेंट में, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट्स, चिमनीज. 1-1.5 लाख रुपीस ऑफ मेकिंग द किचन, टाइलिंग, प्लम्बिंग, वाटर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल्स. ये छोटे किचन का ही मैं ले रहा हूँ. बड़े किचन में ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगा, बट 20 लाख वाले भी मैं लेके चल रहा हूँ. ठीक है. देन आपके फसाड पे इन्वेस्टमेंट होगा 50,000 to 2 lakh rupees डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर फसाड. आपको कैसा शॉप का लुक बनाना है. फिर आपका 1-1.5 लाख रुपीस पॉस सिस्टम्स पे जाएगा, कैमराज लगेंगे. ठीक है. आपका फर्नीचर आपको परचेज करना है, इंटीरियर्स कराने हैं. अगर छोटी शॉप है तो 3 to 4 लाख रुपीस आपका इंटीरियर्स एंड फर्नीचर्स में लग जाता है, AC एंड ऑल, है ना. ये एक बेसिक शॉप का कैलकुलेशन है. देन आपको उसके अलावा लाइसेंसिंग की जो बात होती है, फूड लाइसेंस, GST वगैरह सब मिलाकर के 50,000 to 1 लाख रुपीस आपको उसका टारगेट लेके चलना है. ठीक है. एंड देन अब जो बैकअप कैपिटल की बात आती है वो इसमें, हाँ मतलब अगर इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस ऑब्वियसली आपके पास फूड की नॉलेज है तो आप मनी सेव कर लोगे. अदरवाइज 1 to 2 लाख रुपीस कंसल्टेंट ले जाते हैं टू मेक योर मेन्यूज, है ना. आपको शेफ हायरिंग में पैसा लग जाता है. वो हम काउंट नहीं करते नॉर्मली, बट वो लगता ही लगता है क्योंकि किसी के थ्रू आप हायरिंग करोगे, किसी को बुलाओगे, ट्रेनिंग का टाइम लोगे, फिर किचन ट्रायल्स होते हैं, 10-20-50 हज़ार उसमें लग जाता है. बिकॉज आपको फूड बना के चेक करना है, सर्विंग्स फाइनल करनी है, पोर्शन साइजेस की R&Ds करनी है, डिलीवरीज में कैसा खाना जा रहा है, वो सब आपको देखना है. इसके अलावा सबसे पहले आपको फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए कि आपकी आएंगी कितनी. फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल करा कि मेरी फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रुपीस है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो वन टाइम हो गया, ये तो वन टाइम केपेक्स हो गया आपका. हाँ. इसके अलावा इफ योर फिक्स कॉस्ट इज से 50,000 रेंट एंड
10-20,000 electricity, 10-20,000 maintenance, and 70 to 80,000 of salaries. तो 1.5 lakh रुपीस का आपका फिक्स एक्सपेंस हो गया. तो आइडियली 3 to 6 months का आपके पास बैकअप होना चाहिए, बट होता किसी के पास नहीं है. तो कम से कम 3 months तो आप लेके चलिए. तो बंदे वहां पे बहुत लॉस कर जाते हैं, बिकॉज 20 लाख का 20 लाख लग जाता है केपेक्स में, और आपका जो बैकअप कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन होती नहीं है. देन यू गो फॉर लोन्स, और से आप ट्रैप, पेमेंट डेट ट्रैप शुरू करते हो, डेट ट्रैप में आ जाते हो कि आप वेंडर्स का माल आ रहा है नॉट पेइंग. वो सब इशू है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका 20 लाख का बजट है तो मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए मार्केटिंग का साइड करके रखिए. Ideally is 10% of your capex. Still 6-7-8% is very important, because आज के टाइम पे if you're not marketing your brand, then कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने का. ठीक है, किसी किस्मत अच्छी उस पे आ गया, don't take that as an example. कई बच्चे गिफ्टेड होते हैं, वो बिना पढ़ाई करे पास हो जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम सब भी पास हो जाएंगे. ठीक है, तो पढ़ना पड़ता है उसके लिए, तो मार्केटिंग करनी पड़ती है. अब कई लोग बोलेंगे ये की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो उसके अलावा तो बाकी देखो कुछ हिडन कॉस्ट है. आई आल्सो टेल दैट कि आप जब रेंट पे आप शॉप लेंगे, यू हैव टू डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट आल्सो, व्हिच इज 2 to 3 months of your rental period, and some paperwork, 40 to 50,000 rupees. And if you are hiring any broker for that shop जो आपने ली है, तो उसकी 1 month कमीशन और 15 days कमीशन, whichever is applicable, तो वो भी आपको पैसा रखना होता है. तो मोटा मोटा 20-25 लाख रुपए में अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. अगर कार्ट लेवल करना है तो 7-8 लाख रुपीस में भी हो जाता है. बहुत छोटा करना है तो 4-5 लाख में भी हो जाता है. बट अगेन यू हैव टू सेट योर इन्वेस्टमेंट टारगेट कि आप किस रेंज में जाना चाहते हो. ओके. सो मतलब इतना तो समझ आया कि 20 लाख की कैलकुलेशन कैपिटल है, जेब में है, रेज भी नहीं किया हुआ, तो भी एक टाइम में डिप्लॉय नहीं कर रही है. एटलीस्ट कितना बैकअप रखना है? 30% कह सकते हो. हाँ 30% मतलब 5 से 6 लाख का बैकअप होगा तो आप इजीली सस्टेन कर जाओगे. अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि यार अब सेल नहीं हुई, आज सेल नहीं हुई, इस हफ्ते सेल नहीं हुई, तो कैसे होगा. फिर वो टर्नओवर घुमाना मुश्किल हो जाता है. एंड फिर वही 25 लाख फोकस दूसरी चीज पे चला गया. हाँ बिल्कुल. देन यू आर जस्ट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस कि आज अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है. राइट. इसके अलावा क्वेश्चन है, एक चीज रह गई थी जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, तो जो हमने टेक अवे की बात करी थी, क्लाउड किचन वाला रह गया था. और क्लाउड किचन का मेरा अभी एक सलाह है कि ट्राई कि क्लाउड किचन ना करी जाए, बिकॉज उसमें प्रॉफिट मार्जिन आर मीगर %. वो भी आप अच्छे से मैनेज करो तो 5-7% का मार्जिन है. वो भी आप सेल्स आपकी 10 लाख 15 लाख की रेंज में जाती हैं तो. Okay. Is taken by Swiggy, Zomato, and you are dependent on them. Okay, that is shocking to me actually, because इधर रिसेंटली बॉम्बे में बहुत सुनते कि मेरे को क्लाउड किचन खोलना है, मेरे को क्लाउड किचन खोलना है. एसेट लाइट भी है. वो एसेट लाइट ही है एंड कैश इंटेंसिव है. एसेट लाइट सही है, बट दैट इज मंथली ऑपरेशन इंटेंसिव बिजनेस. ओके. और आपके पास लीवरेज नहीं है, बिकॉज आपका मेजर बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है एंड मेजर ब्रांड्स आर टेकिंग द इन्वेंटरी ऑफ स्विगी जोमैटो. तो वो आपको जरूर देखना है कि आपका ट्राई टू मेक 40 to 50% ऑफ योर बिजनेस ऑफलाइन, ईदर थ्रू डायरेक्ट डिलीवरीज और थ्रू डायरेक्ट सर्विंग ऑफ द कस्टमर्स. उसमें आपका हेल्दी बिजनेस बन सकता है. और अगर वो 100% हो जाता है, देन जैसे हाईवे मॉडल है, हाईवे मॉडल गिव्स यू 30-35% ऑफ योर प्रॉफिट्स ऑफ योर सेल्स. वो इसीलिए है बिकॉज एवरी पेनी इज डायरेक्टली इन योर पॉकेट. You just have to manage your fixed expenses, nothing else. So मतलब गेम वही है कि जैसे नॉर्मल थिंकिंग ये थी कि क्लाउड किचन वाली बात होगी कि इजी दिख रहा है. मतलब जो आपने जो एडवाइस दी, जैसे ऑफलाइन ही सेल करो, मेजर एटलीस्ट ड्राइव करो मेजरली. मतलब लोगों का ये रहता है ना कि एक आप मतलब कॉन्ट्रेरियन एडवाइस दे रहे हो रेस्टोरेंट बिजनेस में, ये वाली, क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम एडवाइस लोगों की ये है जो रन ना कर रहे हो. मैं तो बात ही नहीं कर रहा जो एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो सोचते हैं करेंगे कि ठीक है क्लाउड किचन मस्त है, कोई कॉस्ट नहीं है, फर्नीचर ये वो होस्ट नहीं करना, वेटर्स नहीं, ये सब नहीं, राइट. तो इससे तो यही समझ आएगी मतलब कॉन्ट्रेरियन एडवाइस की ट्राई टू सेल ऑफलाइन, क्योंकि आप एक्सपीरियंस सेल करके ही प्रीमियम प्राइस प्रोबेबली कमांड कर पाओगे.
बिल्कुल, देखो, और सबसे बड़ा ना आपको समझना है कि आपकी जो भी बिजनेस है ना, उसकी इकोनॉमिक्स ड्राइव कौन कर रहा है, ज्यादा पैसा कहाँ से बनेगा, चाहे मेरा फैक्ट्री का बिजनेस है या मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है या फिर मेरा किसी को सप्लाई का बिजनेस है। अगर मैं सप्लाई में भी एक ही अपने बायर पे 90% मेरा बिजनेस है और उस बायर ने आज मना कर दिया कि मैं आपका माल नहीं खरीद सकता, आपका बिजनेस खत्म है। तो यू हैव लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कि आपका यू आर सप्लायर टू एन ओईएम कि हाँ भाई 3 साल आपने मेरे से माल लेना है इन रेट्स पे, देन यू हैव 3 इयर्स ऑफ कंफर्म्ड बिजनेस। रेस्टोरेंट में ऐसे है नहीं, डेली यू हैव टू फाइंड अ न्यू कस्टमर। कोई कस्टमर आपको 3 साल आपसे खाना नहीं खा रहा है, तो आपको ये सोच के चलना है कि मेरी लीवरेज कहाँ है। अब कई लोग रेबेल फूड्स का एग्जांपल देते हैं कि दे हैव मेड अ 1000 करोड़ क्लाउड किचन बिजनेस। भाई उनको 15 साल लगे, उन्होंने अपने सिस्टम्स बनाए हैं, ब्रांड डेवलप करे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दाल मखनी बेच दे रहा है। बहरूज बिरयानी इज अ ब्रांड, ओवन स्टोरी इज अ ब्रांड। दे हैव नाउ टेकन द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट टू आफ्टर hundreds of crores of investor money. राइट। तो आपके पास उतना टाइम है, उतनी लीवरेज है, एंड देन दे हैव अ सेपरेट लीवरेज विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. Our Domino's is not giving the same commission as Kadak Singh the Dhaba. They have their leverage. और मैकडी और से बर्गर किंग, एनी ब्रांड यू टेक, इवन आज लोग अमरीक सुखदेव का एग्जांपल देते हैं कि उसने एक हाईवे का बिजनेस बनाया और करोड़ ऑफ मंथली इनकम करते हैं। आपको ये बात समझनी है कि वो लेवरेज उसके पास है। आज स्विगी जोमेटो वाला उनके पास कोई जाएगा कि अपना सा बिजनेस लिस्ट कर लो, दे विल से भाई मुझे नहीं करना, मेरे पास गाड़ियां खड़ी हैं 100 रोज की, अभी 1 घंटे में खड़ी होती है, तो मैं तुम्हें बिजनेस क्यों दूंगा। ठीक है ना। तो वो आपको सोचना है कि आपके पास कितनी लीवरेज है। आपके पास लीवरेज नहीं होगी तो बिजनेस नहीं बनेगा। Yeah, that was super insightful, yeah, the cloud kitchen bit especially. कि सबको इजी लग रहा है। काफी लोग पूछते हैं, वो सबसे बड़ा यही क्लिक बेट आता है कि 5 लाख में स्टार्ट कर लो, 7 लाख में कर लो, हो जाएगा, मैं मना नहीं करता, बट उसके बाद पैसा कैसे बनाना है आपको। और मार्केट जो है ना, जैसे आप अभी इससे पहले स्टॉक मार्केट डिस्कस कर रहे थे, मार्केट में एफिशिएंसी आई जाती है, आर्बिट्राज होती है कुछ टाइम के लिए। आपने स्टार्टिंग के टाइम पे जोमेटो स्विगी के टाइम पे 2018 19 20 में क्लाउड किचन डाली, यू वर मिंटिंग 20% ऑफ योर प्रॉफिट्स इजी। देन जोमेटो स्विगी रियलाइज की यार मेरे तो इनसे और पैसे ले सकता हूँ, मैं इनसे एड्स बढ़ा सकता हूँ, इनसे कमीशंस बढ़ा सकता हूँ, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। देन अ न्यू मैनेजर विल कम कि सर एक नया मॉडल आया है, आप इस पे इन्वेस्ट करो, आप नहीं करते तो सर हमारा लास्ट है, हम इसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। देन यू आर स्टक, या मुझे तो क्या कर रहे हैं, अब तो बात माननी पड़ेगी। फिर यानी 1% 2% करते करते 5 साल में यू आर डाउन बाय 8 to 9%, खत्म। तो वो आपको सोच के चलना। राइट, वो चीज मतलब वो वाली पिक्चर तो हिडन होती है, मतलब लोग देखते नहीं। जैसे वही ना कि आप बोल रहे हो 5 साल पहले वो 20% था और अब 30% पे आ गया, राइट। हाँ, तो वो आपको और ऑलरेडी मार्जिन, मतलब ऑलरेडी आपने बताया कि कोई आइडियली अगर कर रहा है तो टॉप लेवल पे गेम खेल रहा है तो 20% 22% बनाएगा, एवरेज लेवल पे 16%। और अगर यही कॉस्ट, तो वो वाली चीज है। ठीक है, ठीक बात है। तो और एक और चीज है, जैसे कई लोग आरओआई पूछते हैं, तो एक आरओआई जो है एक एवरेज आउटलेट की 1.5 से 2 साल रहती है। सो फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड 20 lakhs, तो यू विल रिकवर द सेम इन 18 to 24 months। तो ऑन एन एवरेज मंथली यू विल अर्न 1 lakh rupees। ये इफ यू have a good ROI, you can make that in 12 months also. So by earning 1.5 to 2 lakh rupees per month, do not expect कि आपने 20 लाख लगाया और आप 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे। ऐसा होता तो आप सब भी पॉडकास्ट छोड़ के हमारे साथ ही काम कर रहे होते। इतना पैसा नहीं बनता है एफएनबी में। Is this metro specific or otherwise also कि metro city के लिए specific है ये? नहीं, एवरेज है ये, सबका सिमिलर ही है। Okay. Good outlets make very good money in 12 months, but average outlet or if a low performing outlet will recover that money in 36 months also. अगर आपका नहीं चला वो तो फिर पैसा खराब ही है, वो तो मतलब फिर तो लॉस ही है। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। हिमाचल में कब आओगे आप? शिमला मनाली वहां पर कब लॉन्च कर रहे हो? प्लान जी अभी देखो ऑनेस्टली वहाँ की हमने टारगेट नहीं करी है, बट अभी हम मेट्रो सिटीज का ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं या फिर प्रॉपर सिटीज का, नॉट टूरिस्ट डिपेंडेंट। ठीक है ना, जहाँ रेजिडेंशियल सेक्टर अपना अच्छा डेवलप्ड है या फिर एस्पिरेशनल है तो वहाँ कर रहे हैं, बट धीरे धीरे करेंगे। और थोड़ा सा हमें लॉजिस्टिक्स मैनेज करनी पड़ती है कि हमारे को सर्विस देनी पड़ती है।
तो हमने जैसे बैंगलोर खोला, तो वहाँ पे 1.5-2 महीने मेरी अपनी टीम रही उनके साथ, आउटलेट वालों के साथ, बिकॉज इट वाज अ न्यू टेरिटरी, न्यू जोन, और वहाँ पे ट्रेनिंग देना, फिर उनको समझाना, वो बहुत, हमारे को स्टार्टिंग में वहाँ पे लोकल सर्विस स्टाफ हायर किया, वो लोकल कन्नड़ लैंग्वेज बोल रहे थे, बट मेरे पास जो कस्टमर्स आ रहे थे वो HSR के टेकीज आ रहे थे, वो कह रहे मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। तो we changed our staff कि मिक्स कर दिए, कुछ कन्नड़ वाले भी डाल दिए फॉर द लोकल पीपल, एंड कुछ प्रॉपर नॉर्थ इंडियन स्टाफ जिनको प्रॉपर हिंदी आती है, तो वो थोड़ी सी चैलेंजेस लोकल लेवल पे देखने पड़ते हैं। आई थिंक आपको वीरदास का सुनना चाहिए और बॉम्बे में अच्छी बटर चिकन लेके आनी चाहिए, लाइक दैट इज वन थिंग वी आर लैकिंग हियर फॉर श्योर। नहीं आएंगे, बॉम्बे तो आएंगे बिल्कुल। वी हैव लॉन्च्ड इन पुणे, वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पांस। तो बॉम्बे Because देखो, we need इट्स अ one tough here, one. yeah. Because I think when we also go, like my friend and I, we have to go for butter chicken. We're going to this one place since the last, I think, 15 years, like since childhood, like कि वही शीतल का बटर चिकन खाना है और कुछ है ही नहीं खाने के लिए। बिल्कुल, देखो बॉम्बे ना, देखो काफी सैचुरेटेड मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, बट रेंटल्स आर वेरी हाई, सो वी हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। फ्रेंचाइज को हमें यूनिट इकोनॉमिक्स देनी पड़ती है, सो इफ आई ओपन अ कंपनी ओन्ड स्टोर, इवन इफ आई मेकिंग अ 1 लाख मंथ लॉस, आई विल रन द आउटलेट फॉर 2-3 years. फ्रेंचाइज कैन नॉट डू दैट, सो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि हम कहाँ खोलें, कौन से एरिया में खोलें, कितने रेंट्स पे खोलें, कितना बड़ा स्पेस मिल जाएगा उतने रेंट पे। इस चक्कर में हम डिले हो जाते हैं। अगर कंपनी ओन्ड खोलने होते तो बहुत जल्दी और खोल सकते थे। Right. All right. I think this was pretty much insightful. Danish, any more questions? No, I think that's it. And the good part was कि आपने, हमारे तो बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस है, बट आपने उनको भी इन डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया कि ये भी चीज होती है, ये भी चीज होती है। दैट वाज नाइस। नहीं बिल्कुल, देखो आपसे जो भी लोग देख रहे हैं सीखेंगे, और ज्यादातर देखो यंगस्टर्स सीखते हैं। थोड़ा सा ना क्या है कि ऑनलाइन छोटी छोटी क्लिप्स देख करके बिजनेस माइंड बना लेते हैं लोग, विच इज वेरी रिस्की। आपको डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। तो वो मुझे लगता है कि बिकॉज मैंने वो सारी गलतियां कर रखी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव डन ऑल दीज मिस्टेक्स माई सेल्फ एंड देन ऑल्टर्ड देम बाय इन्वेस्टिंग फ्रेश कैपिटल और डूइंग न्यू बिजनेसेस। तो मैं चाहता हूँ कि वो टाइम लोगों का सेव हो, एंड पीपल शुड फोकस ऑन द बिजनेस मोर एंड हाउ टू अर्न मनी। तो आपको MBA में नहीं सिखाया था ये? MBA में बुक वाली नॉलेज होती है ना। When you go into the market, then you realize कि वो जो लाला जी बैठे हैं ना गल्ले पे, वो रोज का 20-50 हजार कमा रहे हैं, वो MBA का कोई फर्क नहीं पड़ जा रहा उनको। Then you have to compete with that लाला। Correct. और फिर रियल एस्टेट की मुझे 2020-21 के बाद समझ आई कि आई कैन मेक अ ब्रांड बाय गोइंग डबल डाउन ऑन द रियल एस्टेट। पहले मैं भी क्लाउड किचन ही कर रहा था, मैं भी सोचता था कि अरे पागल बंदा है जो 2 लाख रुपए का रेंट दे रहा है, एंड आई एम डूइंग द सेम बिजनेस इन 30,000 ऑफ रेंट। फिर जब मेरे मार्जिन टाइट होने स्टार्ट हुए, तब समझ आया कि वो 2 लाख वाला क्यों 2 लाख पे बैठा हुआ है। राइट, ठीक है। All right. I think we covered almost everything. And thank you very much for joining tonight and explaining us. Thank you, Kawal. That was actually superb today. Like, I'm a foodie, so I enjoyed a lot understanding what's going behind the scenes. बिल्कुल। बाकी कुछ भी होगा तो है ना। 100%। बाकी विशिंग यू बेस्ट, और देखते हैं आप ट्रिपल डिजिट जल्दी क्रॉस करते हैं। I mean, wishing for it. Thank you so much. All the best to you guys also. Superb channel, superb initiative. All the very best. Hope to see you in Bombay soon. Thank you. Bye. Thank you. Bye. All right. I think we did the longest guest segment, but because it was so interesting, and one more thing is, almost everybody wants to know about this thing. It's not some specific, right? So that was nice. So I think, yeah, I mean, it was just flowing and flowing. I didn't even know we were speaking for like 1 hour now. So yeah, but so many hidden insights, you can say, कि जो बाहर से easy दिखती है, सबको लगता है cloud kitchen is easy, right? But that's not the case. So I think now, talking about founders, the latest hot topic related to founders this week was okay. So what's happening here? So I think like people must be not knowing, but this founder is the founder of Dhan, like Dhan the broker.
His Twitter ID is being practical, and he recently tweeted that he's a 25 plus year customer of this top private bank, and he has a 800 plus CIBIL score, and the relationship with the bank is since years, and he's top 0.1% of this bank, and he was facilitated by this bank as a top fintech innovator, but Okay. his home loan was rejected. And why this is happening? And the funny part is the bank has lent money to his employees, but not to him. And if I'm not wrong, his company. So just to tell everyone, we are talking about Praveen Jadhav. So he's the founder of Dhan, and I think Dhan is valued somewhere close to, if I can just get the numbers, $1.2 billion, and it's in broking industry. So it is anyways gonna make money. I mean, I don't see any broker losing money if they do it pretty well these days. Few people are making money. Broking is one of them, right? So still like his home application got rejected. Home loan application got rejected by the bank. The funny part is this went viral. Like you know how tweets go viral. It's on news and WhatsApp. People started assuming, like his friends and family, that his business was failing, and it gave a wrong signal about how this healthy company is actually struggling. Right. I mean, that's what people believe कि अगर कोई लोन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ठीक है, मतलब भाई क्रेडिट स्कोर खराब होगा, और या फिर है ही नहीं, कोई एसेट्स ही नहीं है, कोलेटरल ही नहीं दे पा रहे किसी अलग तरीके के लोन में ना, तो लोगों का परसेप्शन तो वही रहेगा, राइट? बट दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम फॉर like in India. So like if you are self-employed professional or running your own business, if you're taking loans, bank usually flags you in a risky segment, like because you are running your own business and you are not some employee of a stable company. So that's how bank is doing these days, or I can say this has been the model from old age probably. They believe 9 to 5 job guys are more stable. They will have cash flow which will always come at the end of the month, right? So their life will be more stable and they will be able to pay loan. And in this case, the I can say the cycle is entirely different for someone who is trying his best to build a business, and even at a certain level, like they have built it and they are still struggling to get the approval from bank, and banks still flag them as a risky customer for their lending business. So that's the case which is happening here. So the actual concept here is actually because when you're doing any kind of credit transaction, like from a bank point of view, they are underwriting predictable monthly salary slips and cash flows. And like right, these founders, promoters, even traders have that. They do not take that kind of salary from the company, like in terms of cash flow. They try to minimize that, and the income is mainly sitting in these ESOPs that are there, or probably in equity, right? And the entire system that has been built in so many years flags it as very risky and has unreliable borrowings and irregular income, and then they get flagged off as a red flag, and the companies are struggling to, like the founders are struggling to get loans. See, from the bank's point of view, it makes sense because they want some kind of guarantee that a 20-year loan, I will be able to get back some kind of money. And these founder incomes are genuinely hard to predict, right? Like you do not know what will happen to Dhan after 20 years. Right. So from the bank's point of view, also there is a argument that they also need to minimize their risk. But yeah, like I don't agree with it fully. Yeah, it's pretty weird. I mean, anyways, real estate is pretty hot these days. Very few people, I can say, anyways, some people just show the courage to buy a home and take this 20-year loan. And then there is a guy who is running $1.2 billion valued company, which is in broking industry. And bank says, look, no, we don't think you are good enough for our loan criteria or those. I believe it's still pretty unfair, and there must be certain other criteria for at least someone, I mean,
whose companies is valued at $1.2 billion, right? That's not someone, I get it from one point, like somebody is starting a company, 20-year-old, they are doing this for what, 3 odd months, 6 months, maybe even 1 year. I get this point. But when you are operating a company, and the worst part here is, or I can say the funny part here is, his employees are able to get home loan from the same bank, and it's just their boss is not able to get the home loan just because he's founder. Like that's a little harsh actually. Yeah. But again, I think it was a great chance. I think it's happened this week only, and probably if I was the CXO of a bank, I would approve his loan first, right? Because you end up winning probably the entire company's accounts in the future, and some kind of other revenue you can generate for the bank through the same, probably Dhan's IPO in the future. You never know. You could be the So many investment banker. streams. Yeah. But I have faced it actually. So I don't have a home loan or as such, but I have faced this in terms of credit card. So whenever my relationship manager asks for, they need certain requirement, some income statement. So whenever I send it and they say, then they see this thing that, you know what, your 80% or 90% of your earning comes from market, and we don't consider it as income as such. So that's been the case, and that's one of the reasons why I always get rejected for premium credit cards despite meeting their income criteria. And now I have given up. Now I'm focusing on making more money so that the other way plays around. They gonna approach me, look, you are doing good, we are offering you this. That's what I'm focusing on in 2026. So actually, there was this rumor, right? In 1980s, one bank rejected Dhirubhai Ambani's loan, and like 30 years later, Mukesh Ambani bid to buy that bank. And like that time, credit was very important, and they were like, you're doing business, there's no cash flow, and like 30 years down the line, his son is trying to buy the bank. It's quite funny. And pretty much Bollywood kind of stories. Yeah. All right. So yeah, just want to explain this. This is a ladder which we have prepared, like how bank usually give credit. So bank is usually very, very comfortable to, give money to people. We are calling this category a secured borrower. So what it means is they are probably having a collateral, which is in terms of FD, property, or probably gold also, right? Then on second level, salaried professional. So they value their stable income, like they expect this will keep on coming. So these are again easiest customer for banks for these kind of lending stuff. Then there are established business, right? So the thing is, they also get it because it's a brand value and visible cash flow, those kind of things, right? So bank are pretty much comfortable in lending to them. Then these two categories, which is self-employed and the startup founder. Startups are really risky, and even self-employed folks, people believe like, it is a high risky thing. Even people believe, and banks also believe the same thing. So that's why these guys have to borrow in certain other manner, or you can say higher rate somewhere, right? So that's been the case, and that's how the profile looks for bank. That's how they view as a customer for their lending business. They are not here seeing your resume, or which college you have been to, or what's the valuation of your company at the moment. It's about how secured you are in terms of your financial life or those kind of things. So by secure here means it's safe. That's what banks actually aspire to do. That's exactly why I'm doing a job. I want to ensure I get the premium credit cards and home loan. And we want to so we got a comment actually कि इस तरीके से तो इंडिया में एलन मस्क को भी लोन नहीं मिलता. Fair point, actually. If he's not taking any salary, probably he'll not get any loan from our banks. Right. And anyways, broking is still a very stable kind of thing. You can explain it, but how will you explain it to bank? We are building rockets, SpaceX and all. Right. Yeah. And one more comment is here, like only income tax department cares about trader or self-employed people. That's right. Nobody else cares about it.
And we want to play a clip actually, which is So that clip, to give you some background, this is not just an India phenomena. It happens all over the world, by the way. So we are playing this clip, and this is about the guy Adam Neumann. So they did this web series. He is the WeCrashed. founder of WeWork. Yeah. So there was a web series called WeCrashed. It's a story of WeWork. And so in this clip, we will be showing you how he was struggling to secure a credit line for himself for his purchases, despite founding a company like WeWork. All right, that's before WeWork actually went bankrupt and all. So, or I don't know whether it's bankrupt or somebody bought them out or something happened. But yeah, let's watch this clip. It's interesting. So. You have a wonderful day. Good afternoon. Hello, how may I help you today? I'd like to open a line of credit. Oh, great. One of our personal bankers will assist you momentarily. Thank you very much. No problem. Go ahead and insert your ATM card. Go ahead and enter your PIN. On behalf of Chase Bank, I'd like to thank you for being a loyal customer for 7 years. Congratulations, Ms. Newman. Looks like you're pre-approved for our Sapphire Preferred card. You earn 2 times points on dining, including eligible delivery services. There's a $95 annual fee, plus a credit limit of $10,000. 10,000. I think I'm going to need a bit more than that. I can certainly help you with that. How much were we thinking? 50 million. I know, right? You have $43,000 in your bank account. Google me. It's okay, don't be shy. Hey, Roger? Roger? Adam, you are now what we call in the banking industry a UHNWI. You know what that means? No. It means ultra high net worth individual. Congratulations. As the chairman here at JPMC, So that's the case. And this happened in Google Me moment. Yeah. All right. What we were discussing apart from this. Cool. So yeah, it's not just a India phenomena. It's been happening around the world where banks function the same way. But I hope something happens. I mean, that feels bad actually as a self-employed guy or a founder of a company. So let's see what happens in this thing. I think he got it approved at the end. We're talking about Praveen. I'm not sure about the development, but probably there was update that he got it approved. Yeah. So what do you think should be the next topic today? Sure. Let's move on to the next topic. All right. So next. Okay, we are adding Just Dial in the clown move. So what's the reason behind this thing? So last week, Just Dial went up 35% in 2 days, while the entire market was struggling. Just Dial was unstoppable because it fired its CEO, and I think he was there since quite a few years since the start, and the stock finally took off after years of dormancy. And Just Dial is known for being the call center that we had, the call desk that we used to have earlier when we had landlines, and it was probably an extinct company according to me, but
Yeah, it's back alive. And it's pretty much alive. They recently made 166 crore, the recent result, and we are calling it fired, but they are calling it a planned transition. So let's see. That's a fancy name, but respect to the guy. I mean, VSS Mani we are talking about. He founded this company in 1996 probably. So he was there for around 30 odd years, and right now he just left the company. And I don't know how it feels. You are the founder of a company, and then there is a news that you are leaving the company, and then market is like, yeah, we are cheering for this move. Thank you very much for leaving. So stock goes up 35%. That's been the case here. So actually, Just Dial has been famous because of two reasons. One is that Reliance had bought a stake here for I think 1064 rupees per share, and they have been sitting on paper losses since quite a few years. They're down 50% on the position. So that was one key thing why it was famous. The second, actually, why it was famous was Just Dial was trading less than the cash that it holds. Like, what I mean by that is Just Dial holds 6,000 crore of cash, but the market cap was only around 4,800 crores. So basically, the market is valuing the actual operating company at less than zero. Like, you're buying the whole company for less than the cash that is there. And shareholders were getting nothing back, and it was a pretty much dead stock since years. Right. So just to go in depth, at the moment, Just Dial is valued at 6,500 crore after this up move, and they got 6,000 crore cash. So the stock is somewhere close to 760 or something, and the cash value is 708. So out of, it's like when you buy the stock, you are getting 708 rupees of cash equivalent in this company, and rest is their business, right? Whatever. So market was not valuing it at the like earlier, but at the moment looks like market just changed its stance and probably liking this move. Right. And like earlier, also it was backed by Reliance, the cash was always there, and probably they needed some kind of trigger, like a management change, like we spoke about in a few episodes back, that Cupid also had a management change and it went undergo a big turnaround, and like it became a secular growth story now. So yeah, these are all key things. And to give some background to that, VS Money has stepped down as MD and CEO from 31st July onwards, and ex Flipkart executive Dinkar Rappu takes over as CEO from 1st August. And also, the Reliance has started taking it seriously that now they are appointing their own finance head as the new CEO, who is Dinesh Taluja. Makes sense. So anyways, I think Reliance owns what, 40% stake in Just Dial now, or probably more. Yeah, it's 60, almost 64%. 64%, yeah. So plenty of cases for Just Dial. As you said, Just Dial seems like a dinosaur kind of company in new age. So their bear case is actually Google Maps, which is showing businesses to you. Google Maps is happy to share, contact details and all. And considering this company was started in late 90s, right? So from there on, Google Maps is now dominating such kind of business listing at the moment. That's a bear case, but there could be a bull case. As you mentioned, the Flipkart guy will be joining as the new CEO. So he got the experience with over how to run the online kind of business. Like he had worked for Flipkart for so as you said, like he was former Flipkart group head of strategy. So let's see. That's the bull case. I mean, that's the new entry here. How it plays out from here on. Yeah, but I don't remember the last time I've used Just Dial. I think it was over the landline when we had those telephone books with letter-wise names of people with the numbers. And since then, I think I've never used Just Dial. Have you used Just Dial recently? I think they pivoted to some B2B kind of thing. Probably they must be making money from listing or something. That's why I said the bear case for Just Dial is AI and Google Maps. Like
whenever, like, if I have to find a badminton court, or you can say any store, or suppose any mechanic, or my first default search goes to Google Maps. So, and Just Dial only pops up on the Google search, and we are not even talking about trying to search businesses on Google search. So on Google Maps, it's just listing on Google Maps. That's it. Nobody can enter there, right? Let's see what happens from here on to Just Dial. But at the moment, stock is up 35% in last 2-3 days. That's the current trend for the stock. Let's see. I think it's going to be interesting. Another management change, like we spoke about last time, and maybe it could do a Cupid move. You never know. Like they could really turn around the company from here with the Reliance backing. And the good part is that they got 6,000 crore cash. Their market cap is 6,500 crore. So at the moment, it is looking still bit respectable. We are calling this bit respectable because it was humiliating earlier. The market cap before this move was 4,500 crore and company was having cash of 6,000 crores. So this could be one story. Maybe, we hear those stories. We made 10x money. This company was available at lesser market cap than the total cash they were holding, right? Those land banks. This actually happened, right? In 2021, if I'm not wrong, in 2021, BSE had cash plus CDSL stake greater than its market cap. And we all know what happened with BSE since then, right? So you never know. It's just in the case of BSE, it was in the sector which boomed in COVID. And the challenge here for Just Dial is how do they break out of this bear case, which we just discussed? Like they are into listing business, right? So I think how many business they have. So earlier we can say it used to be a monopoly, probably. We don't know. I mean, early 2000, it could be. We were pretty young to comment because then there was no Google Maps or as such. But at the moment, everybody got it. So let's see how maybe they have 6,000 crore cash. So maybe they can invest this cash into launching something new. That's also possible. You never know. Yeah. Yeah. Okay, so let's move on to the next segment now. Okay, so yeah, I will explain this thing. Yes, time is moving really fast, and we are in 2026, and 2020, the year 2020 was 2020 days ago. So we have crossed 2020 days from the year 2020. You may think COVID was just here and those kind of things, but the reality is more than 2,000 days have passed from that COVID year actually. So a lot of things have changed in those 2020. We would like to hear your views. Like, what's your thought on this? Because at least I believe these 6 years went like anything. I think everybody feels the same in this case. Absolutely. And I think whoever took any bet in 2020 has paid off. Be it stocks, be it real estate, be it anything, right? Whatever anyone put their heart out into in those tough times gave multiple returns, not only monetary wise, but other ways also. Like we became friends because of that, right? We were active on Twitter, and this is there because of those days. And we can't forget that year, right? It was that 1 year that kept outdoing itself every month and month after. Oil was negative for the first time in history, right? And people were paying to take away oil because there was so much. And look at us now, checking Brent crude oil prices almost every day because of the Strait of Hormuz. The market crashed, and like it was like 1929 Great Depression times when everything was falling, and like we were like the world is going to end, and probably in the next few months we were at all-time highs and stocks were rallying like never before. So yeah, it was crazy times, I feel. And nobody actually believed this because if we go to March 2020, when lockdown happened, there was so much panic. People were just rushing to buy their, groceries and all, just stocking it up. Like it was so
you can say it was very tough to predict how world gonna look. I mean, using hindsight bias, we can say it right now. Yeah, obviously, somebody gonna build vaccine and all. Those days we used to study things like the development of vaccine is not some website kind of thing. It takes years in the research, and then vaccine came up, mass vaccination program. Then it was about who will supply to poor countries and all. But India did pretty well in this case. In fact, we got what company we got? There was two companies probably who were manufacturing vaccine those days. Covaxin and Covishield. Covishield was the other one, right? So, and then talking about market perspective, Nifty was somewhere close to. Nifty started the year at 12,000 or something, and then it went to 7,500. And I think on 7,500, Prime Minister Modi said, "Time for lockdown, guys. 20 days, just relax, and don't go out." And that day was the day of, you can say, highest amount of panic in India. You can say, like, we gonna see a lockdown for next 20 days. How things gonna happen from here on? And that was the day when Nifty made its bottom. That was the lowest level you saw Nifty in that year. And I think in 3-4 months we were trading at new highs. We crossed 12,400 levels, and from there on, just bull market went like crazy. You also faced second wave of COVID. Everything came up. Bull market just never stopped. So just to add some numbers here. Yeah. So everyone remembers the crash, right? And also the rip to new all-time highs, and assumes that these blue chips have minted money. And I think my biggest takeaway from the lockdown was the power of stock market, right? If you invested 1 lakh rupees in HDFC Bank in 2021, which was 31st December 2020, which was 2020 days ago, you would have 1.05 lakh today. And that is the power of stock market. Right. And it used to be famous stock, and it has delivered FD returns for last 5 years. So we are not talking about compounded FD returns. It's just that number, 5% number we are talking about. And everyone's favorite, TCS also did something similar. Like, if you invested 1 lakh in TCS in 2020, you would have around 80,000 in 2026. That is the power of stock market again. But on a serious note, just want to break this down, break this table. So we are taking here, the starting date is 31st December 2020, which was the last day of 2020. And Nifty did deliver 74% return from that day till now. And the top 5 winners of Nifty are Mahindra and Mahindra, which delivered 340% return. Tata Motors, again 308% return. Then the next 3 are Hindalco, Bharti Airtel, and Adani Ports. And the worst ones are actually TCS and Infosys, Hindustan Lever, Wipro, Asian Paints. All famous names, all quality names delivered negative returns in last 20 days. That's what we are talking here. These used to be the safest names in the house. Everybody just used to blindly buy the dip in all these names. But the return have been negative in last more than 5 years, what we're talking here. And the sectors that people used to not look at, which was metals and autos, Mahindra, Tata Motors, Maruti Suzuki, Vedanta, Hindalco, have all outperformed these names. Even the infra companies like Adani Ports, and even telecom like Bharti Airtel have outperformed all these consumer and hot famous names that people said were the safe and quality investments. So a lot has changed. I mean, in 2020, when market was crashing, and I used to see TV channels and all, they used to be like, just buy the companies. Consumer will always be there. People will always be buying soaps, Colgate and those kind of thing. Paints will always happen. IT companies will always be there. In fact, it's a good thing for IT companies because remote work gonna kick in. They will save money on rent and bunch of other things, so many things. And nobody was talking about how Tata Motors was there. These are just boring business. We always mention them
high capex boring business, right? Mahindra and Mahindra, Tata Motors, Hindalco. Everybody was like, these are cyclical business. Let's not risk money in these stocks. And put money in safe stock. Asian Paints used to be the stock which delivered 10 consecutive years of positive returns in early 2020. I'm talking about. And at the moment, it is not able to deliver positive return in 2000 days, right? That's negative. And we are talking about how it had a history of delivering positive return every year. The giants, IT giants, TCS, Infosys, TCS delivered minus 21% return. Infosys delivered minus 12% return. These are the safest company. And HUL, again, a safe name, just didn't deliver returns in last 5 years. But yeah, I think it breaks the notion also of long-term holding without tracking, right? Just buy and forget. More like buy and track also, because a lot of changes have happened in all the industries as such. Because you see, everyone thought, that time no one's going to use their cars, no one's going out. Why do we focus on auto? But look at us Right. now, right? Everyone's buying cars at all-time high levels. So yeah, I don't think we can predict too much again. And I think people need to learn one important lesson here. Direct stock picking is really hard. This is the data which we are getting in 2026. So it's pretty easy to explain things. Yeah, we're gonna see, boom from Bharti Airtel, Adani, and cars will always be there. So Tata Motors gonna deliver returns. But these are the stories which were there for companies which delivered negative returns also. I mean, TCS, Infosys, HUL. So direct stock picking is actually really hard business. Don't think it is one of the easiest business where you will buy some stock and studying everything. Lot of variables plays out here, and so many things can go against you. And that's why index fund actually saves you from all these decision making. Like Nifty delivered 74% return in 5 odd years. That's a healthy return, I would say. It's just in last 2-3 years Nifty has been flat, but still you don't really need to worry about which company gonna rally from here on, which sort of business gonna boom from here on. You just don't need to answer these questions. So if we assign, let's assume you even underperform such kind of, let's assume you have a great stock picker friend and you underperform him, that's still absolutely fine, because you are not getting troubled on daily basis, on quarterly basis, tracking earnings. You are just buying index. That's it. I mean, index is delivering you market returns without without worrying over these questions, which involve so many answers, so many variables, right? So that's one of the major lessons from this table, I would say. True. 74% return. 74% return is not bad, I believe. And you have to also see the effort to reward ratio, right? It's almost Yeah, exactly. 0. In that terms, absolutely. But yeah, I think crisis give us such chances, right? And you have to capitalize. And that's a reminder, like 2020 days ago, we were like, world's going to end. But look at us now, thinking in hindsight, it was probably the best time to do what we wanted actually. True. And I want to add a story here. Like, one of my friends just started investing. I think last year he started investing. So he asked me like which stocks he should buy. And, he told me like he knows some folks who are recommending him stocks like this gonna go up, RVNL, Nasdaq, bunch of stories and so much analysis behind this, why this company gonna boom and all. And he was confused about it. So he asked me like, which are the companies I should invest in? In fact, he also had some thesis around some companies. And I told him one simple thing. Let's say you have 2 lakh rupees, invest 50% in Nifty 50 and invest 50% in your whatever research you have been doing. Look, I don't know what is happening in quarterly earnings, and I don't track these companies on daily basis or businesses or those kind of things. And then after 1 year or 2 years, if you deliver more returns than Nifty 50, you will
you should allocate all your money to your research, and if you fail to outperform Nifty 50 itself, then allocate all your money in this side. And I met him after 1 year, and you know what, we were discussing like how's the portfolio going and all, and he told me like at the moment his stocks are down 30% odd. The problem he is facing at this stage is, should he buy now or not? I mean, will it keep on falling? Will it bounce back to new highs? Or will these stocks come back to his buying price? Like, these are a decision which one needs to make when they are doing direct stock picking. And he actually told me the good thing is his 50% portfolio, he doesn't really need to think about these variables. So that's one of the lesson I got actually, and he also got from this experiment. He must have seen your stocks going up 20-30% in 1-2 days, so you must have got FOMO, and he's like, I'll also do research like you. Probably that's how most people start, right? And we always talk about all our everyone. winners. We always talk about our winners, right? And it happens to everyone actually. Yeah. We got a comment actually. Bajaj Finance was a steal deal. And Deepak Nitrite was the talk of the town. I think, yeah, we were doing some anti-China kind of thing. Those days, some China plus one theme. Yeah, and those days some API kind of granules and those stocks used to go up. Some Loris Labs also. Those were the hot stocks of that era. So I think we can go to my favorite segment now. All right, so my favorite segment coming from a host who is from Mumbai, it's gonna be real estate. So for the first time, Gautam Adani is India's real estate leader, richest real estate name in India, dethroning DLF. After 10 odd years, he is number one at 90,400 crore value of wealth that he has, beating Rajiv Singh of DLF, who stands at 90,200 now. Adani's wealth rose 73%, and he holds this entire real estate through an entity called Adani Properties, which is not listed. So the entire beneficiary of this real estate boom is Adani himself, Adani and family only. And he has leapt past DLF, and I don't think anyone would have imagined this happening 10 years back, that Adani would beat DLF, who I think you must be knowing in Delhi, right? Everything is DLF there, would be topping this list so quick. Yeah, at least the Gurgaon segment is led by DLF and everything premium you see. So that's the case. But Adani is also coming up with their projects here, but I didn't know the scale is so huge that on a entire, you can say, total level, it's crossing the DLF family. So, like you can see, it has crossed the other leading names like Prestige, Rahejas, Lodhas, as well as DLF. And the main key factor here, the main catalyst was Mumbai real estate, because we know, right, there's no space in Mumbai, and the only ways we can actually fight the real estate market is by redevelopment, right? To increase supply by new buildings. So Adani actually capitalized on that and got a lot of redevelopment projects. So he secured Mumbai's key projects of Dharavi as well as Bandra Reclamation, which was the hottest property. It is almost, I think, upwards of 15 to 20 acres, and it has sea view, and it can command a lot of premium because of the locality. And at the moment, like on Gurgaon case, we have a lot of space, and the price are also going up, and like just going up and up in last 5 odd years. So, and we are also seeing some entries, like we have M3M, DLF was always there, I think, from like the entire Gurgaon was actually built by DLF. Gurgaon was just a village earlier. So these were the guys who acquired the land from the farmers, and then DLF founder, KP Singh, he was the main guy behind the entire development of Gurgaon, because transitioning from a village to a
you can say modern city, or you can say a metro city, takes years, right? Takes a lot of efforts, takes a lot of planning. That was the first person. KP Singh was the first person who took this bet, and I think they were about to shut down their company in 1970s or something, late 1970s. But it's about all DLF. DLF is the leading player in Gurgaon, and so many players are coming up. I think some Mumbai-based players are also coming up here. There was some news, I think. Some company sold 8,400 crore worth apartment or took some pre-booking. Just gonna confirm it. Just allow me a second. So actually, to give some background, real estate through this picture must be seeming that it's doing really well. But if you see CNX Reality, which is the real estate stock market sector for India, has been doing poorly. And this report that is there from Hurun India Rich List actually tracks 150 real estate companies, and only 31 gained value year on year. And the entire increase in value was just 2%. So it is not a sectoral thing that is happening. It is more Adani specific, and it is highlighting that the entire sector is still undergoing some pain because of demand softening, because of IT sector hiring cooling in places like Bangalore and Hyderabad, because they were huge buyers of real estate, and that is also contributing to the real estate slowdown. But like we know, Adani has taken up initiative and taken up these redevelopment bids and projects, and have been passing these incumbents like DLF, Lodha, Prestige. And one more thing here is like DLF was this DLF did the IPO in 2008. So just allow me a second. Yeah, I will get to this story. Yeah. So DLF launched their IPO in 2007, and they raised somewhere close to 9,000 crore. And from 2007, the stock topped out at 1,200 rupees. After that, in 2016, the stock was trading at just 110 rupees. And at the moment, DLF is trading at 670 rupees. So that's been the case. In last 18 years, DLF stock has delivered negative returns to their shareholder, but the properties of DLF in Gurgaon has probably gone up, probably minimum, I would say 10 to 15 times in the last 18 years. So this is what I would say. Should be a disclaimer for those people who say, you just need to buy the stock of companies which you are buying products. If you are buying Colgate for your daily use, just buy Colgate share. If you are smoking cigarette, just buy ITC stock. If you are eating noodles, just buy Nestle stock. That's not the case. DLF properties are up by 15 odd times on average basis in Gurgaon from 2008, but the stock is still down 30% in 18 years. And 18 years is a huge time. That's just not some random volatility of few days, which we are talking about Korea and all. So that's also one of the major lessons from this story, which you just covered. And like that's this saying, right? We have the bricks, the bricks and the FANG. In real estate, there is, in Mumbai specifically, is AJA, which is Adani, JSW, and Ambani. And they have been on the toes and trying to get these projects, redevelopment projects, and put up a good fight to these old age real estate companies like Prestige Group, Lodhas, Oberoi's of the world. So it is not that easy, like you see projects and you can just buy the stock, because disruption is also here in this sector because of these three key players coming in. But I still believe India's real estate can be it's a positive kind of market for all developers. So what I mean by positive is you don't really need to eat each other, I would say, market
like at least in Gurgaon, so much land is there. Like so many new players acquired it. They are building it. Godrej Properties, they are building it. Even Reliance got some Reliance Met City in Delhi NCR. Okay, and I'm talking about DLF was always there. Shobha has also entered in Gurgaon, and recently this company, Mumbai-based company Oberoi Realty, managed to sell. Just allow me a second. So Oberoi Realty was not in Delhi NCR. They recently made the debut, and the company was able to sell apartments worth 8100 crores, and those apartments are not even ready yet, and those apartments will start at 18 crore. That's what I'm saying for per apartment here. So they are able to sell 8100 crore worth apartments. But again, At you least can say that because the size of your room is the size of a flat in Bombay. So in Bombay, it's quite different because you're fighting for the same limited plot and land that we have here. So yeah, two and sides that's of why the I same said coin. that's why I said in Mumbai, that's why I said in Gurgaon, it's not a very, I would say, there is no such issue of land or those kind of things, at least relatively to Mumbai. Like you said, Adani is at the top of the list because he was able to do those redevelopment kind of projects. Here, so much land is available. People are coming out of Delhi to live in Gurgaon now, and Gurgaon got a lot of free land available, like where people can just acquire them, huge companies like them, and they can just build whatever they want to build. There are so many segments you can build. Normal apartments, then even in luxury we have so many tiers, right? This is premium, this is ultra luxury and all. And I think DLF Camellias is probably, I would say, most expensive apartment project of India. uh, it is also here. So huge range is available in Gurgaon. So that's not the case. Let's see. I think Mumbai real estate is a different ball game. I think because I count Mumbai out of India, right? We are not the normal city of India anyway. So because I Everything don't is think priced at 2x. the rates even Kawal was talking about for butter chicken of 400 rupees you get in Bombay. Like butter chicken here starts at 650, 700. So yeah, we are in a But different. I just saw one thing, like Adani family is worth 90,400 crores. So just to break this figure, how much is this number? 90,400 crore. He can spend 500 rupees daily, and he will be able to spend it for 4.9 million years. Or he can buy 18,000 homes, which are worth 5 crore. Or he can simply buy 2 crore worth homes, 45,000 homes. That's how big And this number can you is. give 1,000 rupees to every Indian and still have how much left? Yeah, like how many people we got? 150 crore, right? So if we just multiply 60 or 600 rupee, he can give to everyone from this 90,000. Yeah, that's why I think we need people like him. Cool. Let's check out some comments and feedback. This is the longest stream we have done, and the reason has been we covered a great session with Kawaljeet. He had an MBA in FNB actually in that Yeah, session. right. Right. So at the moment, we are waiting for your feedback or your queries before wrapping it up. We got a comment. one. Yeah. You guys are wearing black for every stream. Is it some kind of code? Yeah, you are absolutely right about it. And thank you very much for observing this thing. Yes, I'm the kind of person you want to ask me what are your 3 favorite color. My answer will be black, black, black. And that's one of the reason the theme of the I'll show tell you is the black. actual reason. The actual reason is he doesn't have any other clothes other than black and gray. Yeah. He's going out for Yeah, a you are party. right. Sitting at home, he's wearing the same 2 colors only. You are right. But brilliant observation. Thank you very much for observing this. I hope we have cleared this out. I think let's wait for a while and let's take feedback from our viewers or any question from their end.
And slowly we have reached episode 6. That's going nice. Also, guys, we are also expanding our content distribution on Instagram also. So you can follow us there. It goes with the same handle, India Money Life. And on X, we are always available. We are delivering whatever is happening in the world. We are breaking it down, pushing our insights on daily basis. So you can follow us there also. Our handle goes with @India Money Life there also. And we're gonna wait for a while. And on Saturday night, we managed to cross 420 viewers. That's a good number for our stream. We were definitely not thinking about this number when we did the first episode. So thank you very much. I will pin our social handles, I think, on our comments. So I think it's time to call it a day. Rajshekhar has said good session. Thank you, Rajshekhar. All right. I think we are again assuming people liked it and we got no feedback at the moment. Cool. Thank you very much for joining us. And we will be seeing you again on next weekend with some interesting stories. Have a good weekend, everyone. See you.